So, are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry-standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the starter pack animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized packs जो हमारा logo emit कर. Now about the map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे पेश किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI Battle Royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है, वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट से. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन, एंड स्पेशली आई विल गिव यू माई इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो.
Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animation to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit करता है. Now about the map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI Battle Royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे that is character animations and character movement. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में so that you can walk with your character, animate होगा and everything. And एक बार वो सब हो गया है, we will move on to the shooting mechanics, जिसमें we teach you how to shoot the player, how to shoot guns and जो player को लगेगा bullet, वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट, जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन Unreal Engine, and specially I will give you my inside tips and tricks. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight, and you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट
we have created stylized bags जो हमारा logo emit करते हैं. Now about the map designing, the theme would be stated as dusty abandoned colony. This map was extended to provide a better and fair five-man battle royale experience. Hi guys. Creating So, are you interested to create your own multiplayer high-end game? proper spawn points. Then join. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tint to make the environment हेलो 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 आ रहा है आवाज़ मेरा अभी अभी आएगा स्ट्रीम पे नहीं आ रहा अभी अभी भी नहीं आ रहा है क्या मैंने ऑडियो इनपुट कैप्चर डाला हुआ है जो भी है आ रहा है राइट डबल नहीं आ रहा ना अभी ठीक है चलो डन ऑल सेट राइट ठीक है सो आई गेस कल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे प्रेजेंट है आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ वेयर आई लेफ्ट ऑफ येस्टरडे ओके ठीक है सो येस्टरडे वी सॉ अबाउट द बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू यूनिटी बेसिकली okay about what this particular game engine is alright हम लोगों ने फिजिक्स कंपोनेंट वगैरह ऐड किया वी एडेड आवर ओन कस्टम स्क्रिप्ट्स एंड आवर ओन गेम ऑब्जेक्ट्स एंड वी ट्राइड टू क्रिएट समथिंग वी डिड क्रिएट समथिंग राइट ओके सो देयर इज़ अ कंप्लेंट कि मेरा आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है ओके मैं माइक का थ्रेशोल्ड वगैरह बढ़ा के देखता हूँ अभी भी नहीं आ रहा अभी आ रहा है बराबर सही है ना हाँ डन कुल शेरविन ठीक है नहीं हो गया ठीक हो गया रख दो फिर भी इधर चाहिए तो मैं स्विच कर दूंगा सारे के सारे यूएसबी के होल्स भर गए अभी फिर मेरे को इनपुट कैप्चर में चेंज करना पड़ेगा डिवाइस राइट अभी कौन सा है अपना माइक्रो JBL ना चेक करोगे ठीक है सी इससे आप वॉइस हाँ बूस्ट कर सकते हो बराबर हो गया हम लोगों ने कल देखा कंपोनेंट्स एंड फिजिक्स एंड गेम ऑब्जेक्ट्स एंड इवन पैनल्स के बारे में टुडे आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग एल्स राइट
सो अगेन जो कल सबका इश्यूज आ रहा था व्हेन वी इंपोर्टेड दैट स्पेसिफिक पैकेज, सबके कोलिजन्स काम करना बंद कर दिए थे. सो अगेन उसका वही इशू था कि डू नॉट इंपोर्ट प्रोजेक्ट सेटिंग्स. व्हाट वी रिक्वायर इज ओनली द स्प्राइट्स, नथिंग एल्स. बता था ठीक है. ओके, सो व्हाट वी ओनली रिक्वायर आर स्प्राइट्स एंड नथिंग एल्स. ठीक है, सो वो स्प्राइट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है एंड आई विल बी रिक्रिएटिंग द टाइल सेट दैट आई ट्राइड टू क्रिएट यस्टरडे. ऑलराइट, इसके पहले आई विल डू गो टू मेन कैमरा एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ. ऑलराइट, वी कैन डिसाइड कि अपने गेम का बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है यूजिंग दिस कैमरा का कंपोनेंट. राइट, जस्ट लाइक इन स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट हम लोग स्प्राइट पे एक कलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग कैमरा पे भी एक कलर मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. ओके, सो ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ऐड कर दिया. इट डजेंट मीन मच बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ. ठीक है, नाउ ठीक है, इसके पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो केस हाउ ईच एंड एवरी ग्राफिक ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड फर्स्ट. राइट, सो अभी कल हम लोगों ने देखा कि व्हेन वी एडेड स्प्राइट्स, मैं लाइव चैट पे एक्चुअली देखता था बाजू में, एक्चुअली चैट का मैं अपने नज़दीक रख रहा था कि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ फटाफट चैट के साथ. यस, गुड मॉर्निंग सरीनास एड्यूस. ओके, better, cool. So take, I have this square, right? Upon this square I am going to create a triangle. Let's say इस triangle का कलर देते हैं हम लोग red, right? Square का स्केलिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग 2, even triangle का भी बढ़ा देते हैं 2. Alright, so सब कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. Then we'll add one more circle. Let's make this circle green and also increase its scale to 2. Okay, now what you see in front of a screen might look very weird. It is very weird, right? But what we want to see is how this images are perceived. What makes something draw before the other thing? That is, who is telling कि triangle पहले draw होना चाहिए, उसके नीचे सर्कल आना चाहिए, उसके नीचे स्क्वायर आना चाहिए. Why is it like that? Is it the hierarchy that matters? Okay, now this is a very common issue या फिर common concern कि hierarchy मतलब listing rank wise usually, कि जो पहले लिखा है वो पहले ड्रॉ होगा, just like in Photoshop layers or anything else. But that is not the case in here. ओके, सो अभी अगर मैं स्क्वायर को आगे पीछे नीचे लिखा, इट डजेंट मैटर कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ ड्राइंग विल स्टिल बी डिफरेंट. राइट, अभी मैं इसको 2D व्यू से 3D व्यू पे स्विच करता हूँ. इज इट कि मैं एक ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे लेके जाऊँ, उसका एबिलिटी चेंज होता है आगे या पीछे ड्रॉ होने का? यस, काइंड ऑफ. राइट, सो अभी अगर मैं इस सर्कल को अगर मैं इस सर्कल को इस स्क्वायर के पीछे लेके जाता हूँ, यू कैन सी कि इट ड्रॉस बिहाइंड द बॉक्स ऑब्वियसली. बट when everything is on the same plane, that is on the same z axis, right, what changes this hierarchy is the ordering layer within the sprite renderers. Okay, so ठीक है, अभी for now I can reset everything back to their original position and I can just say कि no matter what triangle पीछे ड्रॉ होना चाहिए. that is, इसका order in layer मैंने -3 कर दिया. So order in layer is what decides what to draw first. This will get 0th priority. This is going to get priority number 0. This is going to get negative 3rd priority, right? So of course negative मतलब पीछे. So अभी अगर मैं सीन पे जाता हूँ, okay, even in a 3D view, I won't be seeing the triangle anywhere. I mean of course पीछे घूम जाओ, I won't be seeing the triangle anywhere, right? Even if अगर मैं triangle को पीछे लेके जाऊँ, and if it is obstructed by any of this, I still won't be seeing it, right?
I mean that's kind of funky, but ठीक है. So there is no hierarchy या फिर no perspective as to कौन सा चीज़ पहले ड्रॉ होगा. In computer graphics it is generally calculated कि पहले किसको प्रेफरेंस देना ड्रॉ करने में. इफ ट्राइंगल के सारे पिक्सेल्स ड्रॉ हो गए, उसके बाद सर्कल के ड्रॉ हो गए, उसके बाद स्क्वायर के ड्रॉ हो गए, या सर्कल या स्क्वायर पे वाइस वर्सा कर सकते हैं, राइट. इफ मैं बोलता हूँ सर्कल जाएगा -1 पे, सो अभी सर्कल सबसे पीछे नहीं, सर्कल बीच में चलेगा किसके, बॉक्स और ट्राइंगल के. सो आई कैन ओनली सी द सर्कल इफ इट वुड बी between the two of those, but when it gets obstructed by the square as whole, even here. Okay, it doesn't matter कि उसको front से obstruct करो या back से obstruct करो, it will be obstructed as to what is going to draw first. Alright, so ठीक है, this are the basics of how rendering works in layers. Any doubts? ठीक है. सो व्हाट विल बी यूजिंग इस, अभी हम लोग को एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट स्टार्ट ऑफ करने के लिए विल बी अगेन यूजिंग द टाइल पैलेट, राइट. अगेन आई विल से टाइल पैलेट इज, लेट्स से अ कलर पैलेट. In a color palette you have multiple colors such as red, green, blue, orange and so on. Whereas in a tile palette you will have multiple tiles of fixed sizes which you can draw onto your scene, right? ठीक है. So I'll be creating a new palette again in the main folder. Okay, main folder के अंदर I'll create another folder called as tile sets. Jungle. Okay, because what I'm about to create will be called as the jungle tile sets. I forgot to change its name, so I'll be doing it again. मेरे को यहाँ पे भी इसका नेम चेंज करके रखना, right? That was just the folder name, not the file name. Okay, now palette name is jungle as well instead of new palette, which would be kind of confusing. So ठीक है, since this palette is created, we have created an empty white canvas. Now this canvas is empty. We need to drop some colors into its bevels, right? एक palette के bevels में अपने को colors drop करना है या फिर अपने सारे के सारे presets fill करना है. So those presets will be found in Element Sprites, Environment, Tile Sets, and this is the tile set that you want, right? Jungle वाला. I'll just drag and drop it within the tile palette. And again अब मेरे को same directory select करना है tile sets का, jungle का. I'll be selecting this folder and यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा. This is how it should look. Okay, if you're following me. ठीक है. अभी इतना करने के बाद what we want to do is अपने को hierarchy में जाना and we want a 2D object tile map rectangular, right? After having a rectangular tile map, I also want to name it as ground. After naming this as ground, we see there are 3 components in here which are kind of required. Of course, transform is the default component, tile map being the tile map component within the grid component, and the tile map renderer is responsible for rendering each and every tiles that I will be drawing out of this palette. Alright, so ठीक है. I also want to turn on grids, which you can do by pressing this button under C, right? यहाँ से तुम लोग का grid enables grids वगैरह enable and disable कर सकते हो तुम लोग, right? यहाँ पे देख भी सकते हो कौन सा grid तुम लोग को display करना है, X, Y या Z,
उसका opacity क्या होगा, we can also decide that. If you want full opacity you can do that as well. Okay, to origin to handle वगैरह यहाँ पे move कर सकते हैं. If you are lost ever somewhere you can move to handle or move to origin. Okay, ठीक है. Now after this what I can do is I can select any of the color I want or any of the tile I want. Okay, now this is a really big color palette or essentially a tile palette. ठीक है, so I'll just select this tile and make sure कि मेरा paint brush tool selected है यहाँ पर. Okay, cool. So paint brush tool select करने के बाद I'll just click this here. Alright, and after that मैं बाकी के tiles select करूँगा एक साथ. We can also select multiple tiles at once. Alright, just click and hold, and I'll go here, click, move my mouse around, click, move my mouse around, click. So I have created somewhat a long ground. Okay, essentially a long ground. ठीक. After that I want to construct its edges, and इसके बीच का part will be of course available within here, right? So again I'll do the same thing of drawing it piece by piece, with some variations included. So if you can see I have now a ground, but ground मेरे कैमरा में काफ़ी ऊपर दिख रहा. It's because I have drawn it right there. Now what I can do to move it around is click on this selection tool, select all the area जहाँ पे मेरा ground contain होता है. Okay, it doesn't matter क्या select करते हो, just select everything जहाँ पे तुम लोग का ground है. Then move to this move tool. Alright, select move tool and move it around. Alright, अभी के लिए मैं game panel side by side रखूँगा just to see कि what looks better, कहाँ पे properly fit हो रहा. So within the game panel I can see this is where the ground starts. Right, perfect. I got what I wanted. Right, यहाँ से मेरा ground का start होता है, and as I move my camera, if we turn on gizmos we'll see the camera. ओके हाँ, ये भी एक चीज़ है कि गिज़मोस का बटन यहाँ पे मिलेगा इफ़ कैमरा के आउटलाइंस वगैरह देखते हैं तो. सो एज वी मूव अवर कैमरा वी कैन सी मोर ऑफ द ग्राउंड. राइट, सो नाउ फॉर नाउ दिस इज एसेंशियली व्हाट वी नीड. राइट, अ ग्राउंड हैज़ बीन क्रिएटेड, परफेक्ट. राइट, अभी जो सॉर्टर अभी हम लोगों ने जो ऑर्डरिंग लेयर्स देखा था स्प्राइट रेंडर में, दैट सेम ऑर्डरिंग इन लेयर इज ऑल्सो अवेलेबल in a tile map renderer. Alright, so now I want कि whatever I put on this ground should be above the ground. Right, I mean if I add any sprite it shouldn't go behind this grounds. Okay, it shouldn't go behind this ground. So in that case what we'll do is order in layer में जाता है and इसको by default -100 पे रखता है. Right, so whatever sprite we create next will already be created onto the zero order layer, which means essentially above the ground. ठीक है, nice, good, not an issue. ठीक है, now we just want कि we need to import our own. असेट का बता दो कि कहाँ से कल पता है ऑलरेडी. काफ़ी स्लो है ना, काफ़ी ठीक. स्लो, एकदम स्लो जाना भाई. ठीक है, good. Okay, so again assets का देखना तुम लोग को. sure, go to Unity Asset Store. Okay, यहाँ पे you will find this window, search online पे click करो. It's going to open up this Asset Store का page. Search for 2D game kit. Right, this is the asset that you want. Again, I mean already मैंने बता दिया, but ठीक है. We need to open this in Unity. यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज मैनेजर पे ऐड करके रखेगा. You hit import. Which is going to take some time, obviously.
ठीक. Finally, do not switch project. Hit input, hit skip, disable everything. Alright, disable this. Just click art and यहाँ पे you'll find sprites करके एक folder मिलेगा तुम लोग को. Just get that and nothing else. Alright, only sprites and nothing else. Cool. उसके बाद also make sure कि project settings disabled है. Alright, scroll all the way down, disable this. नहीं तो कल वाला issue आ जाएगा वापस कि कोलाइडस काम नहीं कर रहा. उसके बाद import click करो. Alright, ठीक है. Great. Set. Okay. इसको बंद करते हैं अभी. And I hope कि तुम लोगों ने फॉलो किया जिसके पास भी एसेट्स थे. अभी तक ग्राउंड कहाँ पे बना, राइट. वी ओनली यूज्ड द टाइल पैलेट विद इन विंडोज 2D टाइल पैलेट. वहाँ पे वी क्रिएटेड अ न्यू पैलेट एंड वी एडेड all the tile sets within this palette, which we then used by creating a rectangular tile map, which essentially creates a grid component. This is the grid that we are seeing, right? The square grids, and upon this we paint each and every tile within 1 square units. Cool. If इतना clear है then chat पे लिख दो. If इतना clear नहीं है then chat पे लिखो clear नहीं है. Simple as that. If I get nothing within the next 5 seconds, I continue. Continue with this. ठीक है. Alright. So, अभी we go to again Ellen sprites, animated sprites, Ellen, animations, idle, there. Alright. You can see the directory यहाँ पे. If confusion है baby, right? Ellen sprites के अंदर this is the directory. Nice, clear, nice. We just want कि ये वाला एक sprite यहाँ पे drag and drop हो जाए, right? Now what we want to do is exactly what we did yesterday. That is add colliders and physics to each and every body, right? A human, our character, will always have physics included in it, or in them, or her, or him, whatever the pronouns are. ठीक है. So I'll name this game object as Ellen. Ellen के ऊपर I'll add a capsule collider. Alright. इस capsule collider को I'll click on the edit collider button. And I'll fit the collider as per her bounds. Right. We have to make sure कि offset values are kept at 0 or at a clean value where you can calculate each and everything by yourself as well. Right. Let's say y का value is 2. It's perfect. X का value should be 0.5. Alright. This values look clean. If we were ever to calculate कि इस पे कोई नंबर इंक्रीमेंट करके क्या आउटकम मिलेगा, we would be able to do it easily, right? So now ठीक है, we have collider. Now we require a rigid body onto this object, right? ठीक है, nothing else. Just make sure कि linear drag and angular drag 1 पे डाल देंगे हम लोग. Alright. But if we press play, of course, she'll just go right through the ground. Right. So what we require is also a collider onto this ground asset. Now, if you think कि box collider से काम चलेगा, that is not true. Right. Because I can also create tile sets such as this. Correct. I can. Right. Like this.
and I can just create elevations upon elevations. Okay, so if we were to add a box collider, how would we justify this elevated shape, right? So in order to do that, we already have a tile map collider, right? Tile map collider automatically adds collider to each and every tile as its own sprite shape, right? Now what I want you to follow is, हम लोग ने जहाँ पे भी टाइल सेट बनाया था जंगल के, राइट, गो टू दैट डायरेक्टरी अगेन, select any asset and press Ctrl A, that is select all. Hold Ctrl and get rid of this palette. Okay, so we have selected each and every tile that we had converted. Okay, these were the converted tiles. These are no longer images, these are tiles that can be painted on a grid, right? Now we want to change their collider type to grid instead of sprite. Cool. ठीक है. So grid करने के बाद we will be eliminating all pixel collisions that would have been unfortunately created within any of this tile maps or in between any of this tiles, right? It was to eliminate any pixel collisions or unfortunate pixel collisions, right? So if we press play now, our Aaron falls right onto the ground. ठीक है? She collides with the ground. That's it. That is exactly what we want, right? But there is a slight issue. If we were to rotate her even a bit, she just falls right away, because that's how capsule colliders work, right? If you just look at shapes of the colliders and not sprites, it is doing exactly what it is supposed to do, right? Like I said yesterday, ki sprites, that is images and colliders, should work in sync, right? They are two different things, which is the job of the developer to make them work in sync so that everything we see is perceivable, right? If that is not the case, it would be just tagged as a bad game. Alright, so her falling like this is not a good sign. So what we can do is we can go to rigid body 2D. We can open up constraints and we can just freeze rotation so that she never falls on the slightest of nudges if it were made. Clear? Cool. Take it. Alright, so if I press play now, as you can see, she doesn't fall. Okay. Uska rotation is now static. It stays where it is told to stay, or where it is instructed to stay. Alright, take. So now we assign more meaning to this character by, of course, creating our own scripts, which we can do so by creating a scripts folder and adding scripts into the project window and naming it, right? Abhi scripting is not a chapter to be taken lightly. There are so many rules, so many new titles that you will be learning about, right? In order to be familiar with whatever the hell would be going on while coding, you need to at least know about 1,000 or maybe few thousands of its rules, which is again not possible to be
comprehend, which is not possible to comprehend in a day, right? So I'll start with the basics clearly, right? First things first, whenever we write a name of a script, we cannot start with a space or a character. Moreover, we can never use spacebar while writing names for a script file. For other files it's fine, but for script files we cannot add spaces. We replace space bars or white spaces with underscores, right? So a script like player controller would be invalid because it has space between player and controller, which we can eliminate, or we can simply add underscore, whatever you prefer. I prefer Pascal casing, that is capitalizing the initial letters of both the words. I hit enter and एक class बनता है with the same name. Just a minute. Can I please use noise reduction? That is a very good suggestion. पीछे ट्रैफिक का आवाज़ आएगा श्योर. Wait a minute. ठीक है. इसमें जनरली नहीं है, OBS में that feature is not there, but we will try. Shout out bro please. Okay, that was the shout. That was cringe, but okay, whatever. I got nervous while shouting. ठीक है. Cool. I have the player controller script. I hope अभी noise थोड़ा कम आ रहा. Okay, but sure. You know how crazy the traffic is in Mumbai. Like blowing horns, even if it can achieve nothing. So it is what it is. ठीक है. So we have player controller, right? This is the class that we want. Right? We can eliminate everything else. We can just keep this. Right? Eliminate useless headers and the main functions that were automatically created. Cool. Now what we want to do is we want to go to update function, that is the main function, and within here I want to create inputs. Okay. Now to create inputs, what I can do is I can use different script, or I can just do it unoptimally within the script itself. That is, I can first of all write the if condition, the infamous condition which any programmer will obviously know about. If input dot get key, get button, essentially horizontal. In that case, what I want to do is transform dot translate. Okay, the transform would be the transform component of the object the script will be attached to. Alright, if the script is attached to ln, then transform would be ln ka transform. Okay, to be able to move our character left and right based on our inputs, what we essentially manipulate is the position in its transform. Right, if let's say अगर मैं इसको continuously increment करते रहता हूँ,
we can see that ln keeps moving forward. This is exactly what we need to control via our input. Alright, okay. Transform dot translate. I'll write vector 3 dot write into time dot delta time. Right. But this is not going to work on access inputs. This is just going to work on a one-way input. ठीक है. What is that? What is all this? We'll see. Right. अब input के लिए जो भी when we use buttons, alright, this horizontal axis would be present in edit, project settings, input manager, access. Right. As you see, we have an axis named as horizontal, whereas we have 4 buttons assigned to it. The negative button would be the left arrow key and positive button would be the right arrow key, whereas the alternate negative and positive button would be A and D from WSD. Right. Gravity and everything doesn't matter as we are working on a keyboard, right, where a button is either pressed or not pressed, unlike joystick with analog controls where a button can be pressed half. Correct. So we can ignore the rest. What we need to focus on are these parts. That's it. Right. We don't need to change any of this. It is present by default, which we can just use casually. So we'll just have to copy this name and make sure that whatever string you pass within this function has the same exact spelling, right? C# is a case sensitive language, so inputting horizontal with a small h would be criminal, right? And Unity would just recognize it as an error, right? A grammatical mistake. Okay. So if I just play, as you can see, I can move my character around based on my inputs, but of course you have no idea what keys am I pressing, right? So you will just have to trust me on that one. I'm pressing the button D, it goes forward. I'm pressing the button A, it still moves forward. That is, it doesn't react to going negative or positive. Alright, before going there, let's have a breakdown of what transform and translate is. Like I said, this transform would refer to the component for where the script is attached, that is essentially ln ka transform. The translate is a function that allows us to translate its value in a vector direction that I will be passing. The vector direction that I had passed is right, that is 1 on x-axis, 0 on y and z axis respectively, and then we multiply it by delta time, which is the interval between 2 frames. This is to achieve frame rate independency that I talked about yesterday, right? To make it run equally on all devices, good or poor, right? ठीक है, to basically optimize it for all devices. ठीक है. Now we just want कि इसका inputs left and right direction में भी चले. So for that, we will just have to use the same input class within which a static function named as getAccessRaw would be present. Right. अभी इसके अंदर we want to pass a parameter that also says getAccessName, जहाँ पे we need to pass off the same string, that is this. Strings are always written in double inverted quotes. Right here. Yeah. Okay, you're saying key input interfaces shall be invalid for mobile platforms. Definitely, yes. It will be invalid. Mobile platform के inputs के लिए you would have to use different things. You would have to maybe create UI buttons and everything else, which we will also see as of now, but not for just key inputs. So ठीक है. For now, I have just added this. Right. So if I now press play, I can move forward and backwards. Right.
But now I want to be able to control कि क्या speed पे she is moving forwards or backwards, right? So in order to do that, what we essentially do is we create variables, right? Now we also need to understand, one student once asked me this, why do we keep using numbers? It's because the world works on numbers, the computer works on numbers, and we play with numbers to get what we want, to create what we think, right? So everything that we do in an application is essentially performed all on numbers and not sentences, because that is what computer understands, right? Everything just breaks down to assembly at the end, that is to zeros and ones and nothing else. Combinations of zeros and ones, that is how it determines कि exactly क्या हुआ है. Cool. अभी C# language is already part of a big chain, right? Assembly created multiple different variations of the language, which then created the .NET framework, which then created OOPS. और आई गेस OOPS और .NET में मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया, बट ठीक है, उनमें से किसी ने तो क्रिएट किया C# या फिर C++, Java, C languages and everything else, right? And within the C# language we have an API called as Unity Engine. If statement is redundant, yes, we remove it, it's still going to work, but ठीक है, I'll show the downside to this, right? It is still going to work, correct, right? But ठीक है, there is also saying the best code is a code that doesn't run. Okay, so essentially what they are saying is this is the best code, it's not going to run, it's an empty code. So what's happening here is update runs on every single frame, right? So when we, let's say we print something like question marks, right? As you can see within the console window, if I press play, it keeps on printing those question marks, right? Every frame means it depends on मेरा hardware specifications क्या है. For now I am generating 200 FPS, that is in 1 second it recalculates everything 200 times, right? It means it calculates all this, that is multiplying vector3.write with input.get access raw with delta time 200 times in a single second, for when I'm not pressing any buttons. So if I were to hide it behind a condition, right, he only calculate stuff when I am pressing a button, it would significantly reduce the amount of stress put on the CPU, right? Because the calculation will only happen for when I am pressing only those specific buttons, and meanwhile every frame it's only going to check if that button is pressed or not. Alright, take it. I hope that clears that. So this is basically a very basic optimization, right? This is a very basic scenario for optimization, that is hide what you don't have to calculate behind a condition always. Okay? Cool. So now I am going to create a variable that will be called as public float case, right? Which if we then multiply it within this parameter list, within this parameter, we would now be able to control its value from the inspector, because we mark the variable as public, which is a feature in Unity. When you mark a variable as public, if that variable is serializable, then that will be serialized within the inspector, that is script ke inspector pa. Right? So I just put out a pace of 2 as of now,
I press play, I am able to move this character left or right. I increase the pace, I would be able to move it very quickly. I increase the pace even more. She keeps gaining more and more speed. Alright, अभी speed इतना gain हो गया कि she now moves through walls. ठीक. Right. I don't think 2K pace में वो चीज़ possible होता. Right. ठीक है. Yes, JavaScript more preferable, but Unity छोड़ना पड़ेगा फिर, because Unity only supports C#. Right. ठीक है. It depends on the preference कि तुम लोगों को क्या करना. Cool. So moving forward. अभी यहाँ पे it is telling कि reorder operands for better performance. This is exactly where I was interrupted previously or yesterday. So ठीक है, it is telling us to reorder the operands for better performance. ठीक है, reordering changes कि कौन सा चीज़ पहले multiply हो रहा. Now in order to understand this, I am going to create a copy of this. Right. One iteration I'll comment, the other iteration or the other iteration I will fix. Right. How does it change performance based on what I calculate first? Again, now compiler works line by line, letter by letter, word by word, या फिर word by word, letter by letter. ठीक है. Anyways, what you see first is what will be executed first. Right. How the compiler goes is it यहाँ पे उसको एक update function मिला. Alright. It finds its scopes. It goes within the scopes. Line number 10 executed. Is this condition valid? If yes, go within its scope. That is, it goes to directly line number 13, because line number 12 is nothing but a comment. Line number 13, it says, alright, is transform available? Yes. It then moves on to its translate functions and passes the parameter that we have passed. That is this entire thing within the function. And function के अंदर जो लिखा हुआ, it then executes that, and we get the output or the outcome. Right. ठीक है. So parameter passed करने के time, what we have written now is get access raw horizontal. Right. If we were to print this value, that is, we can just simply use the print function, and उसके अंदर we can pass this thing. Right. As you can see, it keeps on giving us 0. When I press the D button, यहाँ पे जाके it gives us 1. When I press the A button, it gives us -1, which is how we perceive direction in a scalar quantity. Right? That is, if the x-axis was multiplied with a value like this, for whenever I press the A button, the value goes -1, or when I press the positive button, the value goes +1. And for when I press nothing, it goes to 0. Right. So if that were to be multiplied with the x-axis, we would essentially get the direction to be moving in. Right. It would only keep changing this vector 3.right to left and right based on our inputs, which is then multiplied by two external factors such as time per delta time for frame rate independency and pace for controlling the speed of our input. Right. So ठीक है, let's see exactly how it enhanced performance. Right. ठीक है, get access raw का value, let's assume it's 1. Right. 1 multiplied by pace का value given it as 2, multiplied by time dot delta time, that is 0.02, multiplied by vector 3.right, that is 1 0 0. Alright, try to multiply all of this as a compiler. How compiler multiplies it takes two variables at once. 2 into 1 would be 2, and then it would move on. Okay, ये सब वापस से repeat करेगा. इसका जो result आया, it will then be multiplied with this value. उसका जो पूरा result आया,
it will then be multiplied with this entire value, right? अभी let's say इस पूरे का outcome आया for this entire thing, the outcome is 0.04 multiplied by 1, 0, 0. How do we multiply a scalar with a vector? We multiply it on each and every axis, right? That is 0.04 into 0.04 into 0 का आता 0, right? So that is 0 into 0. Basically यहाँ पे 3 multiplications carry out हुआ, right? The total amount of multiplications that were carried out was 1, 2, 5. Correct? Now if we just change the way it was written, right, instead of that, let's go with what we had written above. 1, 0, 0 into 1 into 0.02 into 2, right? Now this is going to carry out 3 multiplications with 1, right? उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसका और 3 मल्टीप्लिकेशंस होएगा 0.02 के साथ, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका और 3 मल्टीप्लिकेशंस होएगा 2 के साथ, राइट? विच मीन्स इट नाउ गोज टू 1 into 1, 0, 0 multiplied by 1 will still be the same, right? So that's done. That thing multiplied by 0.02, which gives us 0.02 into 0, 0. That multiplied by 2, which gives us 0.04, 0, 0, right? So this in total carries out 9 multiplications. The way we wrote it now carries out 5 multiplications, correct? So again, doing 5 multiplications would be essentially faster than calculating 9 multiplications every frame, correct? If that makes sense. Does it? Hi. ठीक है. So basically इसको reorder करने से we reduce the amount of multiplication it has to do every time this expression or statement is executed, right? Hence optimizing it. Okay, these are the small steps to optimizing a code. Alright, some cheap steps. ठीक है. Cool. So after doing all that, we are now able to control the player, right? For now the player doesn't have any animations attached to her. We'll go on to animations later, possibly after the break. Before that, what I'd like to do is let's try to create jump. Now like I said, कल मैंने बताया कि formulas वगैरह use करना important होता है, right? It is important to understand all the physics formulas and as well as mathematics. It will only make your life easier as a developer. It is not necessary, but it's an outstanding perk to have. ठीक है? So I'm going to write again an if condition. That is, if input dot get key down. This time we'll be using key down, not button, right? I'll be using the key code enums, and यहाँ पे मेरे को list मिलता है each and every button available on a keyboard or a joystick, right? ठीक है. Key code में I'll simply write space, right? Now what we want to do is to be able to make a body jump, we are required to make it jump on physical forces, right? एक push देना पड़ेगा उसको एक direction में, that is the upwards direction, right? So in order to do that हम लोग को इसका rigid body पे एक force add करना पड़ेगा, that is इसके rigid body का velocity manipulate करना पड़ेगा, right?
ठीक है. So to do that, we would have to reference the rigid body within our class. That is rigid body 2D करके already एक type present है which we can name as body, right? ठीक है. And like I said, within the reset function, cache it. We just write body and तुम लोग को automatically suggestion आ जाना चाहिए था. हाँ, is equal to लिखने पे suggestion आ गया, right? Also, this is not is equal to. This is called as an assignment operator, right? हम लोग जो भी स्कूल के मैथ्स में बोल के थोड़ा सा आदत पड़ करेगा कि दिस इज कॉल्ड एज एन इक्वल टू ऑपरेटर, बट इट इज़ नॉट. इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल टू ऑपरेटर इज डबल of assignment characters together in C#. Alright, so ठीक है. When you want to start as a developer, start naming or start calling things as per global conventions, right? That is, अगर पूरा community इसको assignment operator बुला रहा है तो उसको तुम भी वही बुलाने चाहिए, correct? ठीक है. What does the reset function do? Okay, the reset function एक editor function है. It basically runs the code for when you reset your script. That's it, right? अभी reset करने में मेरा पेज भी 0 हो जाता है. So what we can do is we can always keep a default value onto the space. Okay, that is to if. To assign any value to a float variable, we write if as a suffix. Okay, this is the requirement. This is the grammar required for writing a language like C#, right? For an experienced person, C# and English are very similar languages, right? There are just character replacements, right? And moving from languages to languages, अगर मैं C# से जावा या C++ से मैं वो करता हूँ, it would be as essential as switching to Hindi or as essential from switching to Hindi to Marathi, right? I mean दोनों में characters almost same होते हैं, right? लिखने का तरीका kind of same होता है. It's just that कि थोड़े बहुत words change हो जाते हैं. So that's the difference between all programming languages, alright? Sometimes if you go to languages like Dart or something else, not Dart, sorry, okay, कोई languages they totally change their pace to somewhat from Hindi to Malayalam, जो बहुत ही बड़ा jump होता है. So ठीक है, just an analogy कि कितना similarities and dissimilarities होता है different languages में. ठीक है, cool. Now within the spacebar button, what I am going to write is body पे I am going to use the add force function, and यहाँ पे it requires a vector to force, right? I am going to create a new vector to constructor, and within that I am going to pass parameters for x and y axis. X axis पे we can pass 0 as we don't want to jump the character in a horizontal direction. We want to make it jump on a positive y scale, right? So हम लोग को y पे एक strength डालना पड़ेगा, and this strength would be in a form of an impulse. Okay, now I assume कि तुम लोग ने physics books में देखा होगा कि what is the difference between a force graph or an impulse graph. Force is what gradually increases over time. An impulse is what directly increases within a snap of a finger and only decreases over time. Cool, ठीक है. So by doing this, we are essentially able to make our character jump. Alright, but there's more to it. Like I said, I'll be using formulas, right? Now let's say she is jumping, correct? But we want the character to jump up to a specific height. Okay, what makes a game good is the amount of control the developer can give to a player, right? अभी के लिए she's
just jumping and गुब्बारे के जैसे नीचे गिर रही है, right? She's falling down way too slow and it isn't responsive, it isn't quick enough, it isn't interesting enough. So ठीक है, let's start by just adding एक basic jump control कि क्या height तक jump होगा. We need to be able to specify that, right? So I am going to create yet another public float, or I can just get rid of the full stop, that is a semicolon within C#, and I can write jump height. Okay, let's say 4. No, not restricted jump. ठीक है. So I don't know if you remember कि formula for height क्या होता है. Okay, can anyone tell me what the formula for a height is? How do you get height? ठीक है, मेरे को भी नहीं मालूम. ओनली नर्ड्स रिमेंबर फॉर्मूलास. मैं तो गूगल करता हूँ एवरी टाइम, राइट? ठीक है. It says कि it is velocity square divided by 2 times gravity. Let's paste this into paint. H equals to v square upon 2 times gravity. Right? Now, what is it that we require? We want it to jump at a height. That is, आप लोगों ने height already है अपने पास. What we require is the velocity at which the force should be applied for the body to reach the given height. Correct? So उसको लेने के लिए what we have is gravity, we have height. We just require formula for v. So we just move this around, right? That is, v square को isolate करने के लिए we just write 2 times gravity into height equals v square, where we can just eliminate a square and put this in a square root. Alright, so velocity का formula मिला अपने को, the square root of 2 times gravity into height. Cool. If we are now just able to implement it within our code, we would now be able to control the height at which Ellen would jump. हाँ, याद है मेरे को. ठीक है. Alright, so ठीक है. So let's just say velocity will be equals to square root. Square root is created by using the mathf library and the squared function. Alright, ठीक है. It says 2 times gravity into height, that is 2f into physics 2d dot gravity dot y into jump height. Alright, now this is not the final gravity. This gravity is retrieved from project settings, physics 2d, and this value. This value then needs to be multiplied with अपना gravity scale to be able to work properly, right? So ठीक है, I'll multiply this with body dot gravity scale, that is rigid body के अंदर gravity scale. Alright, and this is the velocity that I will be putting under y-axis. Cool. So ठीक है, since we implemented the formula for jump, what we can do now is, मैंने इसको बोला कि 4 के हाइट पे जंप करना चाहिए. करेक्ट? सो ठीक है. एज यू कैन सी माई कैरेक्टर इज एट अ -2. ओके, अप्रॉक्सीमेटली -2 का हाइट पे. सो -2 पे वी ऐड +4. व्हाट डू वी गेट? +2, राइट? सो शी इज़ गोइंग टू टच +2 एंड कम बैक डाउन व्हेन आई प्रेस स्पेस बार. Oops. Yes, correct. I did a very simple silly mistake.
is that मेरा ग्रेविटी का वैल्यू नेगेटिव का आता है, राइट, नेगेटिव 9.81. सो व्हेन अ वैल्यू इज नेगेटिव पूरे मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस पे, everything becomes negative. That's basic mathematics. So what I need to do is मेरे को gravity को negative नहीं करना है, so I can just write minus gravity. That is minus minus cancel out हो जाएगा. Again basic mathematics. ठीक है. So that is going to stop this error from occurring. Right? As you can see यहाँ पे she touches true and comes back. Alright, ठीक है. If we increase the jump height to 1, right? अभी हाँ, यहाँ पे you will see कि वो पूरा 2 तक नहीं गया, 1.2 तक गया. It's because यहाँ पे calculations इतना fast हो रहा है. It is not possible to reflect everything within the transform variable. So जब मैंने height 1 किया, तुम लोग यहाँ पे देखो कि वो 1.2 तक गया. Alright, it went to 1.2. यहाँ पे उतना दिख रहा, but originally it actually did touch this point. Okay, so ठीक है. बराबर है. Alright. Now instead of add force, we can also do something to make it more even accurate. That is, body dot velocity पे directly we can just add new vector to, that is x पे आएगा 0f and y पे आएगा velocity. That's it. अभी यहाँ पे इम्पल्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंस हम लोग डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर. राइट, ठीक है. जंप हाइट ऑफ 2, इट्स गोइंग टू टच ऑलमोस्ट 0. कुल, ठीक है. Now we can get rid of this local variable or we can keep it. Right. अच्छा नहीं लेगा, ठीक है. Never mind. It is what it is now. ठीक है, cool. क्या होता है? Empty message. Lol. Great. So now we are able to make or move our character, and we are also able to make her jump. Okay, at the height we can define. At a height we can define. Nice. ठीक है. Now there's more to it. We want to add animations. We want to add start buttons and quit buttons and everything. ठीक है. I guess we'll do that all after the break. Right? ठीक है. Catch you back soon. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are the characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम
each and every character can choose to look different. And to further modify them, हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ है. And also with the help of a 3D modeling unit, we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit कर. Now about the map designing, the theme would be stated as dusty abandoned colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है, वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन Unreal Engine, and especially I will give you my inside tips and tricks. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट. एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ है. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit कर. Now about the map designing, the theme would be stated as dusty abandoned colony.
This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए हैं with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we want to देखेंगे is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट होगा एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है, वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are the characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit करता है. Now about the map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए हैं with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we want to देखेंगे is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट होगा एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है, वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट.
वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं। तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन, एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा logo emit कर. Now about the map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tent to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI Battle Royale game. The first thing we will be देखेंगे is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे that is character animations and character movement. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में so that you can walk with your character, animate होगा and everything. And एक बार वो सब हो गया है, we will move on to the shooting mechanics, जिसमें we teach you how to shoot the player, how to shoot guns and जो player को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट, जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन, एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation,
creating your own game physics and game mechanics. Build out character abilities such as spawning scene objects and much more. Creating logic for different game modes. Multiplayer networking and server architecture. Testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया होगा. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit करता है. Now other than that designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है, वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन, एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more. Creating logic for different game modes. Multiplayer networking and server architecture. Testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट, एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया होगा. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit करता है. Now other than that designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए
with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन एंड स्पेशली आई विल गिव यू माई इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are the characters that we have found on the Unreal Engine marketplace and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized bags जो हमारा लोगो emit कर रहा है. Now other than map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we will be देखेंगे is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन एंड स्पेशली आई विल गिव यू माई इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स.
By the end of the workshop, you'll have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना लोगो अटैच किया हुआ. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडलिंग यूनिट we have created stylized packs जो हमारा logo emit करता है. Now about the map designing, the theme would be stated as Dusty Abandoned Colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे पेस्ट किए with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI Battle Royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना है, जो चीज हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you'll have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are our characters that we have found on the Unreal Engine marketplace, and we have retargeted the startup and animations to those characters. इनका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स के लिए मल्टीपल कॉस्मेटिक्स बनाए. सो इन द गेम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन चूज टू लुक डिफरेंट एंड टू फर्दर मॉडिफाई देम हम लोग ने हर एक के क्लोथ्स पे, चेस्ट पे अपना
अपना logo attach किया होगा. And also with the help of a 3D modeling unit, we have created stylized bags जो हमारा logo emit करता है. Now about the map designing, the theme would be stated as dusty abandoned colony. This map was extended to provide a better and fair 5-man battle royale experience, creating essential covers, open spaces and proper spawn points. We have also created a dusty ground with the help of exponential height fog which is available in the Unreal Engine. And to finalize everything, हम लोग ने light assets हर एक जगह पे place किए हैं with proper tint to make the environment look fantastic. Hi, so I will teach you how to create an online GI battle royale game. The first thing we will be making is the blueprints in Unreal Engine, which is the visual scripting language. So if you are not familiar with coding, don't worry, we will teach you how to get further. उसके बाद जो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे दैट इज कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कैरेक्टर मूवमेंट. हम लोग कैरेक्टर को सेटअप करेंगे हमारे लेवल में सो दैट यू कैन वॉक विद योर कैरेक्टर, एनिमेट हो गया एंड एवरीथिंग. एंड एक बार वो सब हो गया है वी विल मूव ऑन टू द शूटिंग मैकेनिक्स जिसमें वी टीच यू हाउ टू शूट द प्लेयर, हाउ टू शूट गन्स एंड जो प्लेयर को लगेगा बुलेट वो सब ट्रैवलिंग कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग पार्ट. एक बार हम लोग का पूरा लॉजिक रेडी है वो पार्ट को हम लोग को नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करना, जो चीज़ हमारे स्क्रीन पर हो रही है दूसरे स्क्रीन पर भी दिखनी चाहिए, वो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होगा. एक बार वो सब हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द पार्टिकल इफेक्ट जिससे हम लोग थोड़ा और ग्लोरीफाई करेंगे लेवल को, थोड़ा और बेटर दिखेगा पार्टिकल इफेक्ट से. वो सब होने के बाद आता है हमारा एंड में यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. जब भी कोई प्लेयर ऑन करता है अपना गेम तो वो लॉबी में कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, एक साथ वो लोग बैठ के एक ही लॉबी में एक ही गेम खेलते हैं. तो वो सब हो जाने के बाद वी विल कलेक्टिवली टीच यू हाउ टू क्रिएट अ गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अनरियल इंजन एंड स्पेशली आई विल गिव यू माय इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स. By the end of the workshop, you will have gained a solid understanding of game development process and have an amazing insight. And you must be ready and have the skill to develop your own high quality games. So what are you waiting for? Register now and join the game development workshop today. Register करो और हमसे आके मिलो. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Game Institute's GI Battleground workshop. In this workshop, you will be learning about game design, network programming, server infrastructure, player matchmaking, and much more. By using industry standard software called Unreal Engine 5, you will develop your own high-end multiplayer game and receive feedback from experienced game developers. So these are the secrets we will be revealing in this GI Battle Royale workshop. Understanding the basic game implementation, creating your own game physics and game mechanics, build out character abilities such as spawning scene objects and much more, creating logic for different game modes, multiplayer networking and server architecture, testing graphics, audio, music and etc. End of thinking capacity. So I'm here to talk about the designing aspect of this game. The first part of the designing aspects are the characters that we have found on the Unreal Engine marketplace. And basketball. Sketchy, you're making me crazy. So guys, congratulations, हमने ऑलमोस्ट पहला गेम कंप्लीट कर दिया है. We are waiting for the last installment. मैं सोच रहा था कि सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं क्योंकि जल्दी हमको सेकंड प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा. Hi guys, so are you interested to create your own multiplayer high-end game? Then join Rocket League. आदमी को बाद में बनाएंगे. हाँ सर रहने देते हैं. ये रेसिंग वाला ना हाँ बस हो गया. नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग ही आता है बनाने. करेक्ट. सॉरी मार्मिक, नेक्स्ट टाइम. ठीक है, फिर आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? सर मेरे को लग रहा है मैच 3 ट्राई करते हैं. मैच 3 बहुत चलता है. मैच 3 बहुत चलता है. मैच 3 ठीक है, हम वो कर सकते हैं. वी कैन कंसीडर दैट. आपको क्या लगता है? बास्केटबॉल. बास्केटबॉल. हाँ बास्केटबॉल. ओके, बास्केटबॉल क्यों? रीजन? मुझे बनाना है सर, मुझे बास्केटबॉल बनाना है. इजी गेम है. अच्छा, इसीलिए स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत गेम बन चुके हैं. मुझे नहीं लगता मजा मुझे भी लगता है स्पोर्ट्स पे तो हर दिन रोज एक नया गेम आता और है. वैसे भी सर बास्केटबॉल के इतने भी गेम्स फेमस थे ही नहीं. ऐसे बास्केटबॉल इंडिया में कौन खेलता है? इसीलिए तो एक तो गेम्स कम है बास्केटबॉल के, ऊपर से कोई खेल नहीं रहा है, तो ये
एरिया है जहाँ पे हम लोग फोकस करके अपने गेम बना सकते हैं और इससे फेमस करा सकते हैं। बास्केटबॉल तो पहले से फेमस है करने की जरूरत। कहाँ पे वो तो रियल लाइफ में फेमस है ना, मोबाइल में थोड़ी फेमस है एंड्रॉइड मार्केट। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे, कुछ और करते हैं यार, बास्केटबॉल बाद में लेंगे। नहीं क्यों बाद में, क्यों अभी करना? हाँ ठीक है, आई नो, हम करेंगे। यस वी विल, आई विल टॉक टू यू लेटर। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स को कंसीडर करना है तो क्रिकेट का गेम बनाते हैं। क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, इतने सारे गेम्स है कि मतलब कौन सा क्रिकेट का गेम लॉन्च कर दो चलने वाला है। हाँ क्रिकेट ठीक है, बट क्रिकेट कैसा बड़ा गेम है, उसको हमको कम से कम 1 साल चाहिए उसको बनाने के लिए, और पब्लिक को कुछ भी बनाया तो वो पसंद नहीं आएगा। क्वालिटी एकदम उस लेवल का क्वालिटी एनहांस करके हमको देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आज खत्म करते हैं इस मीटिंग को, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गेम हमको बनाना चाहिए। चलिए सर बास्केटबॉल बनाते हैं। बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। सर बास्केटबॉल सर। चलो गाइस, बाय बाय। सर बास्केटबॉल। हाँ करते हैं। बास्केटबॉल 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 केची, यू आर मेकिंग मी क्रेजी। सर क्या नाम दिया है, क्रेजी बास्केट। हाँ यार, कुछ डिसाइड किया क्या क्या गेम बनाने वाले? अरे परेशान कर दिया यार इसने, कितना क्या बोलेगा। अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि इसी का गेम बना। तो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हमारा अगला गेम कौन सा होगा, और जैसे कि आप जानते हो स्केची ने मेरी जान खा ली, एंड फाइनली हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि स्केची को जो गेम बनाना है हम वो गेम बनाएंगे। तो स्केची से जानते हैं कि वो क्या गेम बनाना चाहता है। बोलिए स्केची। Hours later. ठीक है, तो फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे, और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ। और जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ, 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी। और बड़ी टीम में बता दूं तो 2 लोग हैं, एक डिजाइनर है और एक डेवलपर है। ठीक है, आपको समझ गया होगा कि कितनी बड़ी टीम है। 2 लोग ही हैं इस गेम को बनाएंगे, ये दोनों लोग 21 डेज में इस गेम को कंप्लीट करेंगे। अभी तूने सर को तो बना लिया है, अभी मुझे भी समझा क्या बनाने का है। Six hours later. देखो इतना सब कुछ करना है। सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हमको सेकंड का प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। ये रेसिंग वाला नाम हाँ बस हो गया, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग भी आता है बनाने। लगता है सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। हाँ बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल क्यों, रीजन? सर बास्केटबॉल बनाते हैं। सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल 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 केची, यू आर मेकिंग मी क्रेजी। सर क्या नाम दिया है, क्रेजी बास्केट। हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे, और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ। और जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ, 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी। और बड़ी टीम में बता दूं तो 2 लोग हैं। देखो इतना सब कुछ करना है।
अबे क्या हुआ, गेम नहीं बनाने का तुझे? बनाना तो है लेकिन यार मेरे को लगता है 3D में बनाना चाहिए, 2D में मजा नहीं आएगा। अरे भाई मैं 2D आर्टिस्ट हूँ, मैं 3D कहाँ से बनाऊँ? अरे तो सीख लेना 3D, उसमें क्या है? अरे भाई 21 दिन में गेम बनाना है, 21 महीने में नहीं। अरे लेकिन देख गेम तो 3D चाहिए, तो एक काम करते हैं, हमें सर से फिर बात करना पड़ेगा इसके बाद। मैं क्यों बात करूँ? तू बात कर। अरे देख देखो 3D और क्या क्या फुजुर फुजुर सर बैठ। क्या हो गया? सर मेरा एक सजेशन था कि गेम को हम अब 2D नहीं। जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। सर मेरा एक सजेशन था कि गेम को हम लोग 2D नहीं 3D में बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2D में उतना मजा आने वाला। 3D में? हाँ हाँ सर, मतलब 3D का जरा सोचो ना, मतलब लोगों को 3D बहुत पसंद है भाई, सब गोलमाल है। 3D ज्यादा तो मतलब लोग ज्यादा मतलब डाउनलोड ज्यादा, और डाउनलोड ज्यादा मतलब ऐड ज्यादा मतलब। ठीक है, 3D करते हैं, 3D करते हैं। ठीक है, 3D कर लेते हैं, लेकिन 21 डेज में कैसे कंप्लीट करोगे इसको? वो तो है सर, 21 डेज में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3D के एसेट्स वगैरह बनाने हैं। तो एक काम करते हैं ना, 10 दिन बाद है भाई, सब गोलमाल है। लोग भी चाहिए अभी? हाँ लोग भी अच्छा, लगेंगे। टाइम भी बढ़ाओ और लोग भी बढ़ाओ। अब हाँ ऑप्शन कोई है नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। अभी अच्छी चीज बना रही है तो उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तुमने सोचा है क्या कौन चाहिए आपको 3D के लिए? कौन से आर्टिस्ट चाहिए? सर मैं सोच रहा हूँ 3D पॉइंट्स। वो दोनों पक्का? हाँ? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है। एक बार चांस देके देखते हैं ना अभी। ठीक है, चलो। Make some noise for the 3D boys. सो गाइस, स्पेक्सी और स्केची के रिकमेंडेशन पे आपको इस टीम में इंक्लूड किया जा रहा है एंड आपका काम होगा 3D पे काम करना। ठीक है, तो आप लोग देख लेना और मैं एक्सपेक्ट करूंगा 3D बॉयज अच्छा काम करें। सर हमारा काम अच्छा ही है। हाँ मैं जानता हूँ, लास्ट टाइम का काम मुझे अभी भी याद है। डायनासोर हेलो, ठीक है। Are we back? So अभी we would want to create some kind of UI, right? To start button and quit button जो भी है गेम को स्टार्ट करने के लिए. For now we just go into the scene and अपना character moves, it jumps and does nothing else. ठीक है. We also want to set up the background. We also want to add animations to the character. We also want to add a UI, which is quite a lot to do within even a span of 4 hours. Alright, as I also need to move very slowly, so I'll try to cover what I can within the given time, and you will definitely learn something, right? You will definitely be learning new things. Okay. So for now, let's move on to the priority, that is UI. That is what I discussed. Okay. To create a UI, we go down to the hierarchy. यहाँ पे we go and create a canvas, right? Now this canvas will be named as again UI, right? इस canvas के ऊपर I am going to create an image. Okay. अभी whenever a canvas is created, it is created as an overlay which is quite big, right? Literally पूरे scene पे मेरे monitor का size cover करता है वो. So this is true 16:9, right? Not only aspect ratio but also the width and height,
करेक्ट, ठीक है. So what I'm going to do is image को rect transform करके component है. Again, yes. Now normal game objects work under transform as to where they will be placed within the scene. UI elements work on a transform that is modified for a rect. Rect is a different language. It is a different concept. So ठीक है. So for now, I just want you to do as I follow. I just want you to follow me basically. So click on this icon. As it says, hold Shift and Alt. Right, hold Shift. You will see some blue dots on everywhere. And if you just hold Alt, you will see the boxes move. And when you press both, you will see the dots as well as the boxes move. And click on this icon on the bottom right. Stretch it all the way. Now this is going to cover your entire scene and it's going to set pins on each and every direction. Alright, like I said, rect works on pins. This pins represent, let's say, holding an element in its place. Right, अभी इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूंगा. It's like hanging clothes onto a rope. In order to hope कि your clothes don't fly away, you add pins to it, right? एक कपड़े सुखाने के लिए उसमें pins डालते हैं, ओढ़ देना चाहिए इसके लिए. So that is exactly what we are going to do in here. How do UI elements fly? You ask. Why would UI elements fly away? That depends on different screen sizes. Now not each and every hardware is going to be of the same size, right? When you create a game, it will be played on monitors with different sizes. So for it to work on each and every screen size the way it is intended, we use the pins to hold and scale them in a place, right? Scale them as well. That is the emphasis, scaling. Pins will keep them at a position and will also scale them. Correct? ठीक है. So for now, this is kept at 100% of the screen's width as well as 100% of the screen's height, which is where we'll make the color black, essentially creating a background. Okay, I hope I'm being followed. But also let me get rid of this. ठीक है. So within this black information, we want to pass down some buttons, right? Let's try out with some basic buttons. Let me first check कि ये लोग ने जो slides दिया UI में, and does it have anything? Menu पे है, sure. There is a background present, which is good. So what we can do is background का जो source image है, we can change it with this sprite, I guess. And since we don't want it, हाँ ठीक है. Since we don't want कि पूरा का पूरा ब्लैक कलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, विल नाउ मेक इट वाइट. ओके, नाउ दिस इज कलर मल्टीप्लिकेशन. ऑफ कोर्स ये फोटोशॉप ब्लेंडिंग इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है. ईच एंड एवरी पिक्सल इज मल्टीप्लाइड विद अ रेड इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू चेंज द शेड, बट इट इज नॉट गोइंग टू ओवरले रेड कलर ऑन टू इट, राइट? व्हेन यू वर्क विथ mathematics between images, pixels and colors, there are things such as additions and multiplication. Addition में क्या होता था कि everything would just turn red, but multiplication में क्या होता है, it doesn't turn all red. There are traces of what was originally set in the image as well, right? Now in order to pursue that more, you can also say कि each and every image in a grayscale would be ranged between 0 to 1, where 1 is the whitest pixel and 0 is the blackest pixel,
right? 0 is black, 1 is white, making gray a perfect gray, a value of 0.5. A value of 0.75 would be a darker gray. A value of 0.2 would be a lighter gray, right? Now add 3 vectors to it, right? Now grayscale would be a scalar quantity. Now to change it into a vector, we now have more information, right? We now have ranges of 0 to 1 in 3 different channels, that is red, green and blue, which is where we can make out any color possible, right? Correct. Now that is the basics of colors and color multiplication. ठीक है, ये अपना background बन गया, that's fine. After this background, what we want to do is we want to add buttons to it. अभी मेरे को actually project पैनल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ because buttons कुछ दिख नहीं रहा मेरे को. If present हो गए तो हाँ यहाँ पे here there, ठीक है. Also येलो ने थोड़ा बहुत titles दिए हुए, so we'll just try to add this title onto the main screen, right? We don't need to drag and drop this now. इसको drag and drop करने से एक sprite renderer बनेगा. What works on UI images are not sprite renderer, are just image components, right? Again, sprite renderer is not optimized or compatible to work with a rect transform. Image, which is an extension, is compatible to work with a rect transform, right? So UI again is a different world. So ठीक है, इसके अंदर instead of background I'll just name background now. ठीक है, इसके ऊपर I'll create one more image and I'll call it logo. That is the logo for this game, right? यहाँ पे I'll add a component called as image, right? इस image component पे I'll add the logo. Simple as that. अभी इस logo को I don't want it to stretch out, right? अभी different devices में it's going to again act differently. Let's just switch to simulator mode and यहाँ पे इस मोबाइल को rotate करके देखते हैं on a landscape panel. This is how it looks on different devices. Like यहाँ पे काफ़ी छोटा हो गया, यहाँ पे तो और छोटा हो गया. It's a little bit bigger, but ठीक है, it doesn't justify anything, right? It is only covering 100 pixels of the screen as the bleeding area suggests. So what we want to do as well now is we want to hold it using pins. Now when I move this pins, notice कि यहाँ पे काफ़ी सारे numbers आ गए. 20% pin के ऊपर, 30% top and bottom pin के बीच में, the rest 50% after the second pin. Now this suggests कि 20% screen के बाद 30% of the screen will be covered and 50% of the screen at the bottom will be discarded. Essentially 20% at the top will be discarded, 50% at the bottom will be discarded and 30% in the center will be covered, right? Because each and every screen is of different sizes. Now if we even forget about PC, mobile mein there are a lot of variety, right? A lot of variety. It is not possible कि we can optimize things for each and every mobile by using pixels. So that is why we use percentages. कि screen का कितना percentage cover करना है आपने को, right? So that is what rect pins do. Alright. हाँ, ठीक है. So I'll just go here and sorry not that इसको सेंटर पे लाने का ट्राई करता हूँ किधर तो, इसको फुल सेंटर पे लाता हूँ and I'll just do it manually. यहाँ पे anchor section है, यहाँ पे you can write it down manually. Like if you write 1, that is 0%. If you write 0.1, that is 10%. 0.2 is 20% and so on. Alright. So we want this logo to stay between 30% from the left and 30% to the right. Correct? Giving us 40% of the screen.
ठीक है. Now what we're going to do is इसका bleeding निकाल देगा left and right में. So this is what we get. Now we also want some verticality, right? Verticality में क्या आएगा? We'll just move it upwards. Oops, not this one, this one. मतलब बोलेंगे from the start of the screen cover 25% of it. Zero out top and bottom, and this is what you get, right? If you want कि start of the screen से नहीं आना चाहिए, थोड़ा नीचे से आना चाहिए, then start from 10%, discard the first 10% of the screen and move this to 6.5 and so on. This is what we get. अभी logo stretch हो रहा है, that is looking bad. So what we can also do is, when our image type is simple, we can hit on preserve aspect. So this is going to show us exactly how our image is supposed to be. Okay, it can scale up and down, but it will always maintain its ratio. ठीक है. I'll expand the horizontal heights to this values, and I guess instead of 6.5 I'll just go to 0.5. So this is what I get, right? Now let us switch to again mobile devices and let's see कि दूसरे devices में कैसा दिखता. Okay, here it covers quite a lot. Here it doesn't cover everything. Alright, there's more white space here, okay. यहाँ पे logo थोड़ा छोटा दिख रहा है as compared to everything else. यहाँ पे तो logo is looking kind of bigger as compared to everything else. So on different devices it covers different percentages of screen, right? So this is the first 40% of the screen, not first, the selected 40% of the screen wherever logo is kept. If मैं preserve aspect निकाल दूँगा, then this is exactly the 40%, right? 40% here looks stretched, 40% here looks stretched, 40% on an iPad doesn't look stretched at all. So that's the difference. Optimizing it for different devices can be quite a pain. That can be made easier when you understand right. ठीक है. अच्छा हाँ, ये भी मैंने देखा था कि ऋषिकेश ने एक डाउट पूछा था in line number 19 वगैरह. I'll cover that. Alright, as soon as I finish the UI का part, we'll cover that. As to why vector 3 and vector 2 were replaced. Correct. Genuine doubt. Nice question. ठीक है. So we have the logo. अभी logo के नीचे we want the buttons to stay the same. So I'm going to create an empty game object and यहाँ पे इसके rectangles वगैरह set कर दूँगा मैं. Oops, गलती से rotate कर दिया. I don't want that. I just want rectangles. Okay. रेक्टमेंट स्नैप भी होता है एंड विल जस्ट से कि गेम ऑब्जेक्ट का जितना भी पार्ट है सब इसके अंदर आ जाएगा. सो दिस इज वे विल कीप आवर बटन्स. ठीक है. सो आई जस्ट कॉल दिस बटन्स, राइट? विद इन दिस आई विल बी क्रिएटिंग ए बटन टेक्स्ट मैश प्रो विच इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट मी टू डाउनलोड द TMP asset. Just click import TMP essentials and nothing else. After this you will see कि यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा TextMesh Pro नाम का, and don't change that, it is what it is. ठीक है. What we need to do with this button is we need to again full rect it. Now rect works in respect to parent rect, right? Like this rect is covering almost कितना 60% of the screen horizontally. So इसका 100%, द सब चाइल्ड का या फिर सब एलिमेंट का 100% वुड बी दैट 60%, राइट? सो इट वर्क्स इन रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट. दैट्स द बेसिक एनालॉजी. ठीक. सो विद इन हियर द बटन लुक्स वेरी अगली, आई एग्री. विल जस्ट हैव टू चेंज द स्प्राइट्स एंड विल हैव टू प्लेस इट प्रॉपरली. Menu पे था and I guess this was the button. This was, yeah. Simple, right? Yeah, that's the button. Of course, it looks way bigger, but ठीक है, we can change that. What we need to do is buttons करके जो parent object है वहाँ पे we'll add a vertical layout. Now I am not sure if this is going to work.
Alright, if this doesn't work, I have another trick up my sleeves which we can use to fix everything, and then I'll be duplicating this button inside, right? I'll call this quit, I'll call this start, correct? ठीक है, now let us try to get those buttons in place. Alright, अभी वो करने के लिए आई गेस अपने को इसका हॉरिजॉन्टल अलाउंस थोड़ा कम करना पड़ेगा. इट्स टू मच इन माय ओपिनियन. ओके, इसका वर्टिकल अलाउंस भी आई गेस थोड़ा और कम कर सकते हैं. Cool. I guess ये ज़्यादा कम हो गया. 1.5. That would be fine. How does it look on a simulator? Oops. Like this. ठीक है. I guess थोड़ा और vertical allowance कम कर सकता है. 4, 6. ज़्यादा कम हो गया. 3, 5, 6, 5. Correct. And within the PC screen, how does it look then? I guess not bad. It's fine. ठीक है. अब इसके बाद इसके अंदर जो फॉन्ट है वी नीड टू चेंज दैट. इट लुक्स अगली, राइट? सो लेट्स चेंज द बटन टू स्टार्ट. राइट, इसको वाइट कलर का करता है एंड दिस इज अगेन अ चाइल्ड एलिमेंट दैट कैन बी फुल राइट एज वेल, एंड वी कैन डिक्रीज इट्स फॉन्ट साइज टू फिट विद इन द कंस्ट्रेंट्स. बट अगेन size, font size is also dependent on different screen. As you can see, if when I switch to mobile devices, the font sizes become very very small. Here a font size of 75 is required, whereas PC पे that same font size would just overbleed everywhere. ठीक है? So that is when we switch to auto sizing, where minimum is kept at 18 and maximum at 72. Right? ठीक है. At 72 means वो जितना साइज तक जा सकता है उतना साइज तक जाता है. It still isn't very good. Right? We can fix that by again using rect pins. ठीक है? So let's try इसका rect pins set करने का. Okay? Child object के अंदर. That is 10% will just discard left and right. Will also discard 10% at bottom and top. Okay? अभी इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग 10% एट द बॉटम, आई गेस मेरे को बॉटम पे थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहिए. इट्स बिकॉज इसका ग्राफिक इस तरीके से बना है कि बॉटम पे ज़्यादा स्पेस ले रहा, राइट? सो दिस वुड बी 0.8. उप्स, माय बैड, नॉट दिस, द वाइट टॉप पार्ट, राइट? और मे बी 175, हाउएवर यू सी फिट. ओके, सो या अभी इसके बाहर वो नहीं जाने वाला है, नो मैटर मैं कितना भी साइज बढ़ा हो इसका. Cool. ठीक है. आफ्टर दैट वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ द क्विट बटन एंड स्टार्ट बटन को रीडुप्लिकेट कर सकते हैं. इसको नाम दे सकते हैं क्विट, राइट? सो व्हाट वी वुड हैव टू डू इज टेक्स्ट पे जाकर सिर्फ इसका नाम चेंज करना है टू क्विट. दैट्स इट. ओके. हाँ, अभी आई से क्विट फिर भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा, सो इसका कंस्ट्रेंट्स और बढ़ाना पड़ेगा अपने को. And what we can do is इस component को copy कर सकते हैं, and if we want to reflect the same things on start, we can just go to paste and paste the component values. Okay, so दोनों भी same values को follow करेगा. So now I think I have start and quit buttons placed quite well. ठीक है. इसके बाद what happens is there is nothing that happens for when I press this start button or quit button. Okay, there is a feedback कि of course वो press हो रहा है, थोड़ा dark हो रहा है, that's fine, but we need to change that. Before that I want to say कि just select your logo and background and यहाँ पे raycast target and maskable off कर दो. Don't ask me why. Okay, ठीक. इसके बाद we'll just go to buttons. एंड यहाँ पे बटन्स के अंदर देयर विल बी अ बटन कंपोनेंट ऑब्वियसली,
देयर वी कैन डिसाइड कि इसका हाईलाइटेड एंड प्रेस्ड कलर क्या होना चाहिए. लेट्स से इफ अगर मैं इसको रेड करता हूँ स्टार्ट बटन को, सो फॉर व्हेन आई प्रेस द स्टार्ट बटन इट्स जस्ट गोइंग टू ग्लो रेड, right? So we can change that. Now instead of doing all that, we can also do something called as a sprite swap, right? So for when this will be highlighted, we can change its sprite, right? Press play, we can do it, change it back, and so on. So if I press play now and मैं start पे जाता हूँ, you can see when I hover over it, it changes its sprite, and when I click it, it goes back. Correct? ठीक है, that's it. Cool. We will have to do the same thing on the quit button as well. Sprite swap, and जो दो sprite provide किए हैं उन्होंने, will make use of that. Alright. Sorry. ठीक है. Now we just want to add functionalities to start and quit button. सबसे पहले quit button में functionality add करते हैं because that would be quite easier to do, right? Now to be able to do that, मेरे को scripts में जाना है and I am going to create a UI manager for now, right? I'll open up the script, let it load, and I'm here going to create a public void quit function, right? It's going to say कि application.quit होना चाहिए. Okay, now also a disclaimer, application.quit doesn't work in Unity editor, which is where we are, Unity editor. So it's not going to reflect कि मेरा play mode quit हुआ है कि नहीं हुआ. So for now I'll just add this UI manager to this UI game object as a component. I'll go to quit button. There is an on click event listener, which is where I'll add to the list this specific object जहाँ पे हम लोगों ने script attach किया था. Within there I am going to select the drop down, select the class that we had created, and select the function that sounds familiar to us. That is the quit function, and done. So whenever I press this quit button, this function will be executed. Alright, follow it. ठीक है. So again मैं इसको प्रेस करूँगा, it's not going to work, take my word for it. So there is a snippet that I want you to write that says hashtag if unity editor hashtag end if, right? Between this we'll write unity editor dot editor application dot is playing will be equals to false. Okay. Cool. ठीक है. So after we add that snippet, now if I press play and when I hit the quit button, मेरा play mode बंद हो जाएगा automatically, right? So I now get a confirmation कि everything is working as intended. So now I just want to add कि start button पे कुछ होना चाहिए. Start button पे I just want कि मेरा island दिखना चाहिए and I'll be playing my game. Correct? अभी के लिए we haven't created our main menu on a different scene. Our main menu exists on the same scene as our gameplay, which is fine. Not an issue. ठीक है. So start button पे will just say turn off UI. Okay, by adding again this UI element, the same game object, but instead now we'll go to canvas and select bull enabled and take this off. Okay, keep it ticked off.
That's it. So now if I press start, I mean I get to my game. Okay, but there is a slight issue. Now let's say, of course अपने screen पे कुछ दिखने वाला नहीं है. Everything is going to look proper in the output, right? But let's see behind the scenes, right? Let's focus on the scene panel. I press play. I am not going to press the start button, but what I can do is I can still control my Ellen character. Alright, so अभी ना मैं Ellen को नीचे गिरा देता हूँ. Fall off. I start and I see no character here. That's not good, right? ठीक है. So वो चीज़ करने के लिए what we also need to do is before starting the game we need to keep off our player script. Right? The script that allows us to control our player should be kept or turned off. Right? ठीक है. And it should be resumed for when we press the start button. That is, we go to player controller, bull enabled, and यहाँ पे इसको turn on करना. And when we press play, I move left and right, it doesn't move because मेरा inputs जा नहीं रहा है. It's because मेरा custom code work नहीं कर रहा है because it is turned off, obviously. So when I press start, it's not going to work, right? Again, I guess इसको और better कर सकते हैं. Let's just remove this listener, and what we are going to do is we are going to disable Ellen and grid as a whole, right? ठीक है. After that, I'm going to create a game object called as I don't think इसका ज़रूरत है, but ठीक है. I'll name this level. Level के अंदर I'll add grid. Right? Grid को मैं turn on करके रखता हूँ. मैं just level को disable करूँगा. Right? I have level. I have Ellen. Right? Ellen can also go within level, I guess. Okay, ठीक है. Level के अंदर डाल देता है. Not an issue. And when we press the start button, we just want to make sure कि level enable होता है. अभी level को हम लोगों ने क्या बंद किया है? Game object. Alright. Now there is also a hidden component. Of course not a component, but transform के ऊपर this area जहाँ पे हम लोग सारे tags and layers देखते हैं, this area or this component is called as a game object, right? So इसका जो boolean था active and inactive करने का, that was the game object के अंदर का set active function. So what we can do again is start पे जाएंगे, we drag and drop level the object that we want to manipulate, and we add the function from the game object that is set active and एक boolean pass करेगा. The boolean's value would be true. When I press play, my scene doesn't exist. मेरा environment exist नहीं करता. It will only exist for when I press start. Right? अभी मैंने गलती से Ellen को भी ऑफ करके रखा होगा. That's a different thing. But ठीक है. Right? So when I press start, I get my Ellen. Now we also don't have to keep her player script turned off as उसका पूरा का पूरा parent ही बंदा. So when a parent is closed, of course all the child objects are closed as well. ठीक है. So when I press start, तभी I can only move my character left and right. That's clear, correct? Again, it is, I don't expect कि सारी की सारी चीज़ें comprehend हो जाए एक टाइम पर. This is what we take months to explain, but I think I'm going at a very slow pace, so I hope you are understanding, correct? "24 concurrent viewers, nice." Now back to Rishikesh का doubt. Are you there, Rishikesh?
चाहिए उतना ले लो। ठीक है, ओके। सो एनीवेज, even if ऋषिकेश का रिप्लाई नहीं आया, just say ठीक है. Why did we use vector 3 and not vector 2? It's because we need to see the type that it's asking for, right? अभी यहाँ पे it's asking for vector 3 translation, so I had to pass vector 3. Whereas in rigid body 2D, if you can see the return type, it's asking for vector 2, so I cannot possibly pass a vector 3. That would just mean an error. Okay, it's not possible. So can we pass vector 2 in here? I guess we can. Okay, now this vector 2 will be converted into vector 3 then. Okay, it looks like it's working fine, but no, there will be an internal conversion. Now that conversion can itself be a little costing, but ठीक है, उतना बड़ा नहीं होगा, it's fine, but still a conversion will happen, right? So that is what we know. अभी वो देखने के लिए कि conversion होगा कि नहीं होगा, we can now go to its implementation, which is where vector 2 का code लिखा हुआ है, and I'll press Control F to find a keyword called as implicit. This is what's going to happen, right? It's going to intake a vector 2 and then convert it into a vector 3, where x and y values will be retrieved from the vector 2 and z value will be 0. So ठीक है, it is what it is. Now since we have start and quit buttons working, again any questions? If होगा then chat पे लिख दो. I don't know कि chat active भी है कि नहीं. Live chat, correct? ठीक है. What? Hey, wait a minute. ठीक है, cool. Now we want to add animations. Alright, let's start by adding an idle animation to Alan. That is, we go to Window, Animation Panel, and we put it somewhere here. Right, we again would have to click on Alan. सबसे पहले Alan को अपने को activate करके रखना पड़ेगा. So Alan को बाहर रखते हैं. Right, इसको enable करके रखते हैं. Now what we want to do is we want to click Alan and hit create. Right, we'll be creating a new animation, but within the assets folder, main के अंदर we'll go to animations, we'll go to Alan, and then we'll create a file name such as idle. Alright, this is going to create an idle keyframe. Now what we want to do is we want to change this images every single frame. Right, now let's say okay, this looks like this. We switch the image and you can see she slightly changes. Now let's imagine कि ये process continuously हो रहा. Right, it's like creating a flip book. Okay, if I turn on image right here and अगर मैं preview इसका फटाफट fast forward करता, you can see there was an animation, right? So this is the animation that we want to play on loop continuously. That is possible by using the animation keyframe or animation window. Right, अभी keyframes के अंदर we are going to add properties where we are going to select the sprite renderer, go all the way down and click plus on sprite. Okay, this is the sprite that we have right now. We'll remove the final keyframe. We can also get rid of the first keyframe, but before that we'll select each and every keyframe and यहाँ पे इसको drag and drop कर देंगे. So we see there are multiple elements, right? ठीक है,
What this does is it only creates this. Okay, now this animation is way too quick. ठीक है, so I'm going to select each and every keyframe and उसको 5 के distance पे divide करके रखूँगा. Alright, each keyframe must go to this 0.05 के numbers पे, right, that 0.1 at 0.15, 0.20, 0.25 and so on. इस तरीके से वो divide होनी चाहिए. अभी I see आगे जाके it's not following the same pattern, so उनको manually मैं थोड़ा पीछे लिखा हुआ. I'll try to adjust them. Each and every keyframe must be divided to an equal distance as to be able to play this video smoothly. Okay, this video should be played onto her game object. And if you can see, यहाँ पे मेरा sprite renderer पे ध्यान दो, it keeps on changing sprite when I play this, right? You can see there are different sprites coming in and out. This is what creates an animation. Okay, I guess मैंने कुछ तो import नहीं किया, so सब कुछ फिर से delete करता हूँ and I'll select everything else and वापस से इसको re-import करता हूँ. Okay, थोड़ा सा stuttering दिख रहा था. I'll again try to divide them all equally into 5 frames का distances. I guess this is fine. I might have missed a sprite or two. ठीक. So after this, what we want to do is, यहाँ से we need to move on to the animator panel. Again, a lot of information to process in this time, but ठीक है. Click on Alan and you'll see a graph where we can maintain its different animation states. Alright. Within here, we can get rid of any state and we can get rid of exit. We don't need to look at that. What we need to focus on is entry, and entry होने पे it goes to idle. ठीक है? That's that. So यहाँ पे एक animator करके component आ गया जहाँ पे मेरा animator controller asset है, which then plays the animation clip upon entry. Alright, this is the hierarchy. An animator component with the animator controller that controls all the animation clips, where idle is one of the animation clips. Cool. ठीक. Now within this, if I just play the game right now, oops, मेरी एलन गिर जाएगी. एलन को लेवल पे डालता. ठीक है. I'll hit start. And you can see idle animation play हो रहा है, right? It's just that कि idle animation ही play हो रहा है, nothing else. It's because we will have to add the other things as well. Now adding a run animation won't be as challenging as adding the jump animation, but we'll see, right? ठीक है. कहाँ पे हम लोग sprites एलन को फिर से बाहर निकालता and we'll go to again the animation window and यहाँ पे drop down on this idle thing and create a new clip. Okay, let's call this walk. Okay, walk. Let's go back and यहाँ पे walk करके एक folder होगा जहाँ पे उसके walk की sprites पड़े हुए होगा, right? We'll select all of that. इसको भी drag and drop करेंगे. We'll divide them equally into 5 frames का distances each and we'll just see if it looks okay. I think it does. ठीक है, थोड़ा laggy feel हो रहा है, but we can change that by changing the playback speed of each and every animation clip as well, right? ठीक है. Now we just want to say कि ये walk clip पे जाएगा कब. Now if we right click on this and set the walk layer as default, मेरा character entry पे ही walk पे चला जाएगा. Oops, I keep on clicking it twice. So ठीक है, इसका भी solve कर रहा मैं 2 मिनट में. You don't need to follow this, but ठीक है.
सो व्हेन आई प्रेस प्ले अगेन एंड यहाँ पे स्टार्ट पे जाता है, यू कैन सी मेरा कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट वॉक करेगा. सो फॉर व्हेन आई एम मूविंग द वॉक इज जस्टिफाइड, बट फॉर व्हेन आई एम नॉट मूविंग I want to switch back to idle, which is where we switch between these two animation clips. Okay, अभी तक हम लोग ने एक स्प्राइट शेप एंड उसका कोलाइडर को सिंक में लाने का ट्राई किया, राइट. नाउ अगेन इट इज द जॉब ऑफ द डेवलपर to also sync animations on top of that. Alright, so we have to sync sprites, that is the image, its collider shapes, as well as the animation it's going to perform, and other actions and other physical activities onto it. Okay, so we'll again make idle as our default animation state. We'll go down the walk and idle से walk पे transition बनाएंगे, that is by right clicking on idle and releasing it on walk. Okay, there will be a string wherein we can set multiple things. Now you don't really want this exit time. Tick everything off, change everything to 0. What we need is layer से parameters पे जाना and यहाँ पे एक variable add करना. This variable will be a float called as pace again. Okay, it doesn't have to be the same name as अपना जो कोड में बनाया हुआ. It can be different, but to avoid confusion usually same नाम लिख देता हूँ मैं, right, to directly establish a link between them. Okay, ठीक है. Now I am going to say idle से walk पे जाने के लिए the pace should be greater than 0.01. Alright, it will go from the idle state to walk state for when the space changes from greater than 0.01. Right, so if I press play again and when I hit start, अगर मैं pace का वैल्यू यहाँ पे मैन्युअली चेंज करता हूँ to 1, you can see my character starts walking. इसके walk का speed we can increase. Instead of 1 we can say 1.5 के speed पे animation play करे, so it's going to look responsive, right. We can also say कि walk pace से 0 पे जाएगा. If इसका pace 0 चला गया चलते चलते, then it has no transition to go back. Okay, now this is a one-way road. Alright, imagine if you take your car into a road from where you cannot come back, like there is no way of coming back. That would be bad, right? It's a one-way road. वो idle से walk पे गया, but walk से idle पे नहीं आ पा रहा, which is where we need to create a transition back to idle, wherein we will follow the same settings, the same conditions, that is 0.01, but instead of greater we'll change it to less. Okay, so if I press play now again, start पे जाता हूँ, I'll say pace को 1 करता हूँ, pace को 0 करता हूँ, it now switches properly, right. Now this is the thing we need to automate within our code. Alright, since all of this is attached to the component, that is the animator, we need to get a reference to the animator component. Alright, so again I'll copy paste this. Instead of rigid body 2D, I'll just write animator and body का नाम मैं anim कर दूँगा. Right, I'll again copy paste all of this and यहाँ पे सिर्फ नेम एंड इसका टाइप चेंज कर दूँगा. That's it. Cool. Now I just want to write कि for when I press any of this horizontal button, I want to say कि anim dot set float, because the variable that we created was of type float. Now there is a second overload that allows us to add its name. The name of the variable we created in the animator was also called as pace. So either we can write pace or we can use the name of operator for pace if the names are similar, right. If the names aren't similar, just write pace, that's fine, right.
and यहाँ पे we'll just write the value for, I mean whatever value we want, let's say 1. alright, अभी coincidentally since मैंने नाम same रखा है, I'll just use the name of operator because that is better. alright, ठीक है. It is often recommended कि इसके बदले hash IDs use करो if you are familiar with Unity, but ठीक है, I will not be diving into the hash collision topics right now. ठीक है. So whenever I press the button, the pace will change to 1. That is what I have instructed my code to do. Right. So we'll just press start and यहाँ पे इसका value notice करो. I'll press the button and nothing happened because I forgot to add animator as a reference. Okay. ठीक है, now it's going to work. As you can see 1 पे चला गया, but for when I leave the button it doesn't go back to 0, which is also what I have to instruct. So I will have to copy this condition and यहाँ पे instead of get button I'll use the get button up, which is wherein हम लोग यहाँ पे control space भी दबा सकते हैं to get all the options. Right. This is for when the button is released. Any keyboard input will have 3 stages: for when a button is pressed as down, for when a button is held as nothing, and for when a button is released as up. Alright, I want to write the exact same thing in here for pace, but instead of passing the value 1, I'll be passing the value 0. Alright, so that's it. Done. We can now move our character with animations. Right. अभी of course इसका moonwalk भी fix करना है. ठीक है. So still, are you catching up all right? Is no one alive on the stream or chat? मेरा आवाज भी आ रहा है राइट बराबर? ठीक है. Cool. So now we move on to jump animation. Okay, this is going to be a bit tricky. Nice, okay, thank you. Okay, so jump animation again tricky होने वाला थोड़ा. So ठीक है. अच्छा नहीं सॉरी, जंप के पहले इसका फ्लिपिंग कर देगा था. माय बैड. फ्लिपिंग कर लेता कि उसका मून वॉक नहीं होना चाहिए. शी शुडंट बी वॉकिंग बैकवर्ड्स, फॉर व्हेन आई वॉक लेफ्ट शी शुड लुक लेफ्ट. राइट, इसके लिए एलन को यहाँ पे बात आते 2 मिनट के लिए. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लिप एक्स ऑन टू दैट स्प्राइट रेंडरर. इट अलाउस अस टू फ्लिप द कैरेक्टर लेफ्ट एंड राइट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग. राइट, सो ठीक है, विल अगेन गेट एक्सेस टू इट्स स्प्राइट रेंडरर कंपोनेंट. सॉरी ठीक है. इसके बाद अभी वी वांट कि जो होल्ड वाला कंडीशन था उसके अंदर वी वांट स्प्राइट डॉट फ्लिप एक्स, राइट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी वर यूजिंग. फ्लिप एक्स, दैट इज़ द बुलियन वी वांट टू सेट. वी विल सेट दिस बुलियन टू द कंडीशन दैट इज इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल लेस देन 0. राइट,
If इसका value less than 0 आता है, then we will be changing it. Alright, ठीक है. Then it will be set to true. If the value is not less than 0, then we'll be setting it to false. That's it. My bad. Drag and drop. Okay. So she can also move left and right now. Okay. If you think idle animation काफ़ी slow चल रहा है, we can also notch it up to 2. I guess ज़्यादा हो गया 1.2. इसका भी I guess 1.5 would be ज़्यादा हो गया 1.25 का playback speed will be fine. Okay, ठीक है. So we can now walk left and right. That's fine. That's great. It's just कि jumping को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. But before we do that, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत optimization भी कर रहा था, बहुत ही basic वाला. It's just that कि हम लोग input.getAxis और horizontal 2 बार निकाल रहे हैं, right? उसको 2 बार निकालने के बदले we can just store it once. That is raw, wherein we write the same thing, and whenever we want to use it, we'll use the same local variable that we had created, right? That would be better. And of course, horizontal लिखने के बदले we can also say कि यहाँ पे रहेगा एक private const string, right? या फिर even just private string डाल देता, that will be horizontal, which will get only property or an auto property that will give us horizontal, right? Since we don't want to store it. This won't change anything, but this will definitely prevent from making spelling mistakes, right? अगर उसको store करना है थोड़ा optimize करना है, then just simply remove this right arrow. Okay, again, not for new people again who are familiar with Unity. I try to cover both the audiences. Even if there is a single guy who has familiarity with Unity or who has hands-on experience with Unity, he should also be learning something, right? So ठीक है, right? We can also make this static. That would be better, right? Since we don't want to create new copies for everything. And again, I don't think player controller किसी और ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो स्टैटिक से फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा बड़ा. ओके, सो ठीक है, गुड. सो आई गेस ब्रेक नंबर 2 का टाइम आया. सी यू सून आई गेस. ऑलराइट, 2:30 को मिलता है वापस. प्लीज़ ट्राई टू फॉलो अप. एंड यूट्यूब का जो भी स्ट्रीम है तुम लोग रिवाइंड करके देख सकते हो क्या हुआ है, कुछ इशू आया रहेगा तो. फॉलो अप करने के बाद व्हेन द ब्रेक एंड्स यू कैन आस्क मी कहाँ पे तुम लोग अटके हो या फिर कहाँ पे यू नीड हेल्प. I'd be happy to. Okay, ठीक. See you at 2:30. Basketball. Sechi, you're making me crazy. So guys, congratulations, हमने almost पहला गेम कंप्लीट कर दिया है. We are waiting for the last installment.
मैं सोच रहा था कि सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हमको सेकंड प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कौन सा गेम बनाना चाहिए अभी? और रॉकेट लीग। आदमी को बाद में बनाएंगे। हाँ सर, रहने देते हैं। ये रेसिंग वाला नाम हाँ बस हो गया, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग ही आता है बनाने। करेक्ट, सॉरी मार्मिक, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? सर मेरे को लग रहा है मैच 3 ट्राई करते हैं। मैच 3 मैच 3 बहुत चलता है। मैच 3 बहुत चलता है। मैच 3 ठीक है, हम वो कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर दैट। आपको क्या लगता है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल? हाँ, बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल क्यों, रीजन? मुझे बनाना है सर, मुझे बास्केटबॉल बनाना है। इजी गेम है। अच्छा, इसीलिए स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत गेम बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता मजा मुझे भी आएगा। लगता है स्पोर्ट्स पे तो आए दिन रोज एक नया गेम आता और है। वैसे भी सर बास्केटबॉल के इतने भी गेम्स फेमस थे ही नहीं। ऐसे बास्केटबॉल इंडिया में कौन खेलता है? इसीलिए तो एक तो गेम्स कम है बास्केटबॉल के, ऊपर से कोई खेल नहीं रहा है, तो ये एरिया है जहाँ पे हम लोग फोकस करके हमें गेम बना सकते हैं और इससे फेमस करा सकते हैं। बास्केटबॉल तो पहले से फेमस है करने की जरूरत। कहाँ पे? वो तो रियल लाइफ में फेमस है ना, मोबाइल में थोड़ी फेमस है एंड्रॉइड मार्केट। ठीक है, हम कंसीडर करेंगे। कुछ और करते हैं यार, बास्केटबॉल बाद में लेंगे। नहीं क्यों, बाद में क्यों, अभी करते हैं। हाँ ठीक है, आई नो, हम करेंगे। यस, वी विल, आई विल टॉक टू यू लेटर। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स को कंसीडर करना है तो क्रिकेट का गेम बनाते हैं। क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, इतने सारे गेम्स है कि मतलब कौन सा क्रिकेट का गेम लॉन्च कर दो, चलने वाला है। हाँ क्रिकेट ठीक है, बट क्रिकेट कैसा बड़ा गेम है, उसको हमको कम से कम 1 साल चाहिए उसको बनाने के लिए, और पब्लिक को कुछ भी बनाया तो वो पसंद नहीं आएगा। क्वालिटी एकदम उस लेवल का क्वालिटी एनहांस करके हमको देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज खत्म करते हैं इस मीटिंग को, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गेम हमको बनाना चाहिए। चलिए, सर बास्केटबॉल बनाते हैं। बनाएंगे। सर बास्केटबॉल सर। चलो गाइस, बाय बाय। सर बास्केटबॉल। हाँ करते हैं। बास्केटबॉल। केची, यू आर मेकिंग मी क्रेजी। सर क्या नाम दिया है, क्रेजी बास्केट। हाँ यार, सर कुछ डिसाइड किया क्या गेम बनाने वाले? अरे परेशान कर दिया यार इसे, कितना क्या बोलेगा। अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि इसी का गेम बना। तो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हमारा अगला गेम कौन सा होगा। और जैसे कि आप जानते हो, स्केची ने मेरी जान खा ली, एंड फाइनली हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि स्केची को जो गेम बनाना है हम वो गेम बनाएंगे। तो स्केची से जानते हैं कि वो क्या गेम बनाना चाहता है। बोलिए स्केची। Hours later. ठीक है, तो फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे, और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ, 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी। और बड़ी टीम में बता दूं तो 2 लोग हैं, एक डिजाइनर है और एक डेवलपर है। ठीक है, आपको समझ गया होगा कि कितनी बड़ी टीम है। 2 लोग ही हैं इस गेम को बनाएंगे। ये दोनों लोग 21 डेज में इस गेम को कंप्लीट करेंगे। अभी तूने सर को तो बना लिया है, अभी मुझे भी समझा क्या बनाने का है।
hours later. तो इतना सब कुछ करना है। सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हमको सेकंड प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। पूरी रॉकेट लीग। ये रेसिंग वाला नाम हाँ, बस हो गया, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग भी आता है बनाने। लगता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। हाँ, बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल क्यों, रीजन? सर बास्केटबॉल बनाते हैं। सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल 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 केची, यू आर मेकिंग मी क्रेजी। सर क्या नाम दिया है, क्रेजी बास्केट। हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ। और जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ, 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी। और बड़ी टीम में बता दूं तो 2 लोग हैं। तो इतना सब कुछ करना है। अबे क्या हुआ, गेम नहीं बनाने का है तुझे? बनाना तो है, लेकिन यार मेरे को लग रहा है 3D में बनाना चाहिए, 2D में मजा नहीं आएगा। अरे भाई मैं 2D आर्टिस्ट हूँ, मैं 3D कहाँ से बनाऊँ? अरे तो सीख लेना 3D, उसमें क्या है। अरे भाई 21 दिन में गेम बनाना है, 21 महीने में नहीं। अरे लेकिन देख, गेम तो 3D चाहिए, तो एक काम करते हैं, हमें सर से फिर बात करना पड़ेगा इसके बाद। मैं क्यों बात करूँ, तू बात कर। अरे देख देखो 3D। और क्या क्या फुजुर फुजुर। सर बैठ। क्या हो गया? सर मेरा एक सजेशन था कि गेम को हम लोग 2D नहीं। जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। सर मेरा एक सजेशन था हाँ। कि गेम को हम लोग 2D नहीं 3D में बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2D में उतना मजा आने वाला। 3D में? हाँ हाँ सर, मतलब 3D का जरा सोचो ना, मतलब लोगों को 3D बहुत पसंद है भाई, सब गोलमाल है। 3D ज्यादा तो मतलब लोग ज्यादा मतलब डाउनलोड ज्यादा, और डाउनलोड ज्यादा मतलब ऐड ज्यादा मतलब। ठीक है, 3D करते हैं, 3D करते हैं। ठीक है, 3D कर लेते हैं, लेकिन 21 डेज में कैसे कंप्लीट करोगे इसको? हाँ, वो तो है सर, 21 डेज में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3D के एसेट्स वगैरह बनाने हैं। तो एक काम करते हैं ना, 10 दिन बाद है भाई, सब गोलमाल है। लोग भी चाहिए अभी? हाँ, लोग भी अच्छा, लगेंगे। टाइम भी बढ़ाऊं और लोग भी बढ़ाऊं? अब हाँ, ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा। अभी अच्छी चीज बना रही है तो उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तुमने सोचा है क्या कौन चाहिए आपको 3D के लिए, कौन से आर्टिस्ट चाहिए? सर मैं सोच रहा हूँ 3D पॉइंट्स। वो दोनों पक्का? हाँ? उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है। एक बार चांस देके दिखते हैं ना अभी। ठीक है, चलो। Make some noise for the 3D boys. सो गाइस, स्पेक्सी और स्केची के रिकमेंडेशन पे आपको इस टीम में इंक्लूड किया जा रहा है, एंड आपका काम होगा 3D पे काम करना। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा 3D बॉयज अच्छा काम करें। सर हमारा काम अच्छा ही है। हाँ, मैं जानता हूँ, लास्ट टाइम का काम मुझे अभी भी याद है। डायनासोर मांगा था, चूहा दिया। सर पर रेफरेंस तो चूहा का दिया था। अरे चाहिए तो डायनासोर था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। तो फाइनली हम इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, अराउंड 30 to 35 डेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। एंड 3D वॉइस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग टाइम पे और अच्छे से सब काम करें। ठीक है, सो गाइस खत्म करते हैं इस मीटिंग को एंड आगे में चलिए गाइस, बाय।
Basketball, 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 basketball. Sechi, you're making me crazy. So guys, congratulations, हमने ऑलमोस्ट पहला गेम कंप्लीट कर दिया है. We are waiting for the last installment. मैं सोच रहा था कि सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हमको सेकंड प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा. तो क्या लगता है कौन सा गेम बनाना चाहिए अभी? और टूडी रॉकेटी आदमी को बाद में बनाएंगे. हाँ सर, रहने देते हैं. ये रेसिंग वाला नाम हाँ बस हो गया, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग ही आता है बनाने. करेक्ट. सॉरी मार्मिक, नेक्स्ट टाइम. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? सर मेरे को लग रहा है मैच 3 ट्राई करते हैं. मैच 3 बहुत चलता है. मैच 3 बहुत चलता है. मैच 3 ठीक है, हम वो कर सकते हैं. वी कैन कंसीडर दैट. आपको क्या लगता है? बास्केटबॉल. बास्केटबॉल. हाँ बास्केटबॉल. ओके, बास्केटबॉल क्यों? रीजन? मुझे बनाना है सर, मुझे बास्केटबॉल बनाना है. इजी गेम है. अच्छा, इसीलिए स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत गेम बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता मजा मुझे भी लगता है स्पोर्ट्स पे तो आए दिन रोज एक नया गेम आता और है. वैसे भी सर बास्केटबॉल के इतने भी गेम्स फेमस थे ही नहीं. ऐसे बास्केटबॉल इंडिया में कौन खेलता है? इसीलिए तो एक तो गेम्स कम है बास्केटबॉल के, ऊपर से कोई खेल नहीं रहा है. तो ये एरिया है जहाँ पे हम लोग फोकस करके हमें गेम बना सकते हैं और इससे फेमस करा सकते हैं. बास्केटबॉल तो पहले से फेमस है करने की जरूरत. कहाँ पे? वो तो रियल लाइफ में फेमस है ना, मोबाइल में थोड़ी फेमस है एंड्रॉइड मार्केट. ठीक है, हम कंसीडर करेंगे. कुछ और करते हैं यार, बास्केटबॉल बाद में लेंगे. नहीं क्यों बाद में, क्यों अभी करना है? हाँ ठीक है, आई नो, हम करेंगे. यस वी विल, आई विल टॉक टू यू लेटर. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स को कंसीडर करना है तो क्रिकेट का गेम बनाते हैं. क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, इतने सारे गेम्स है कि मतलब कौन सा क्रिकेट का गेम लॉन्च कर दो चलने वाला है. हाँ क्रिकेट ठीक है, बट क्रिकेट कैसा है, बड़ा गेम है, उसको हमको कम से कम 1 साल चाहिए उसको बनाने के लिए. और पब्लिक को कुछ भी बनाया तो वो पसंद नहीं आएगा. क्वालिटी एकदम उस लेवल का क्वालिटी अनाउंस करके हमको देना पड़ेगा. एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. आज खत्म करते हैं इस मीटिंग को. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गेम हमको बनाना चाहिए. चलिए. सर बास्केटबॉल बनाते हैं. बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे. सर बास्केटबॉल. सर चलो गाइस, बाय बाय. सर बास्केटबॉल. हाँ करते हैं. बास्केटबॉल, 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 बास्केटबॉल. सेची, यू आर मेकिंग मी क्रेजी. सर क्या नाम दिया है? क्रेजी बास्केट. हाँ यार. सर कुछ डिसाइड किया क्या गेम बनाने वाले? अरे परेशान कर दिया यार इसने, कितना क्या बोलेगा. अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि इसी का गेम बना. तो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हमारा अगला गेम कौन सा होगा. और जैसे कि आप जानते हो, स्केची ने मेरी जान खा ली एंड फाइनली हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि स्केची को जो गेम बनाना है हम वो गेम बनाएंगे. तो स्केची से जानते हैं कि वो क्या गेम बनाना चाहता है. बोलिए स्केची. Hours later. ठीक है, तो फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे. और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ. और जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ. 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी. और बड़ी टीम में बता दूं तो 2 लोग हैं, एक डिजाइनर है और एक डेवलपर है. ठीक है, आपको समझ गया होगा कि कितनी बड़ी टीम है. 2 लोग ही हैं इस गेम को बनाएंगे. ये दोनों लोग 21 डेज में इस गेम को कंप्लीट करेंगे. अभी तूने सर को तो बना लिया है, अभी मुझे भी समझा क्या बनाने का है.
6 hours later. देखो इतना सब कुछ करना है. सेकंड गेम का भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं क्योंकि जल्दी हमको सेकंड प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा. 2D रॉकेट लीग. ये रेसिंग वाला नाम हाँ बस हो गया. नहीं तो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को रेसिंग भी आता है बनाने. लगता है सर बास्केटबॉल. बास्केटबॉल. हाँ बास्केटबॉल. ओके बास्केटबॉल क्यों रीजन? सर बास्केटबॉल बनाते हैं. सर बास्केटबॉल. बास्केटबॉल. Sketchy, you're making me crazy. सर क्या नाम दिया है? क्रेजी बास्केट. हम अभी स्केची के गेम पे काम करेंगे और मैं स्केची को बहुत बड़ी टीम देना चाहता हूँ. जैसे उसने कहा कि मैं 21 डेज में इस गेम को बनाना चाहता हूँ. 21 डेज में वो और उसकी टीम मिलके बनाएगी. और बड़ी टीम में बता दूँ तो 2 लोग हैं. देखो इतना सब कुछ करना है. अबे क्या हुआ? गेम नहीं बनाने का तुझे? बनाना तो है लेकिन यार मेरे को लगता है 3D गेम में बनाना चाहिए. 2D में मजा नहीं आएगा. अरे भाई मैं 2D आर्टिस्ट हूँ. मैं 3D कहाँ से बनाऊँ? अरे तो सीख लेना 3D. उसमें क्या है? अरे भाई 21 दिन में गेम बनाना है, 21 महीने में नहीं. अरे लेकिन देख गेम तो 3D चाहिए. तो एक काम करते हैं हमें सर से फिर बात करना पड़ेगा इसके बाद. मैं क्यों बात करूँ? तू बात कर. अरे देखो 3D. और क्या फुजुर सर बैठ. क्या हो गया? सर मेरा एक सजेशन था कि गेम को हम लोग 2D नहीं. जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है. सर मेरा एक सजेशन था कि गेम को हम लोग 2D नहीं 3D में बनाना. क्योंकि मुझे नहीं लगता 2D में उतना मजा आने वाला. 3D में? हाँ. हाँ सर मतलब 3D का जरा सोचो ना. मतलब लोगों को 3D बहुत पसंद है भाई. सब गोलमाल है. 3D ज्यादा तो मतलब लोग ज्यादा मतलब डाउनलोड ज्यादा, और डाउनलोड ज्यादा मतलब ऐड ज्यादा मतलब. ठीक है 3D करते हैं. ठीक है 3D कर लेते हैं. लेकिन 21 डेज में कैसे कंप्लीट करोगे इसको? वो तो है सर. 21 डेज में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3D के एसेट्स वगैरह बनाने हैं. तो एक काम करते हैं ना. 10 दिन बाद है भाई सब गोलमाल है. लोग भी चाहिए अभी. हाँ लोग भी अच्छा, लगेंगे. टाइम भी बढ़ाओ और लोग भी बढ़ाओ. अब हाँ ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि टाइम लगेगा. अभी अच्छी चीज बना रहे हैं तो उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना. ठीक है तुमने सोचा है क्या कौन चाहिए आपको 3D के लिए? कौन से आर्टिस्ट चाहिए? सर मैं सोच रहा हूँ 3D बॉयज. वो दोनों पक्का? हाँ? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है. एक बार चांस देके दिखते ना अभी. ठीक है चलो. Make some noise for the 3D boys. सो गाइस स्पेक्सी और स्केची के रिकमेंडेशन पे आपको इस टीम में इंक्लूड किया जा रहा है. एंड आपका काम होगा 3D पे काम करना. ठीक है तो आप लोग देख लेना और मैं एक्सपेक्ट करूंगा 3D बॉयज अच्छा काम करें. सर हमारा काम अच्छा ही है. हाँ मैं जानता हूँ. लास्ट टाइम का काम मुझे अभी भी याद है. Yes, of it, whatever that was. ठीक है. I'll just try to do what I can. अभी हम दोनों आई गेस वॉक और आइडल बनाया राइट. नाउ क्विकली मैं जंप इम्प्लीमेंट कर देता हूँ. थोड़ा भगा होगा मैं राइट. थोड़ा फास्ट लेने का ट्राई करता हूँ. आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द जंप एनिमेशन एज वेल एज द बैकग्राउंड राइट. तो ठीक है. इफ़ तुम लोगों को कुछ इश्यूज आएगा यू कैन
रिवाइंड एंड वॉच बैक. अभी वही रिपीट करने वाला जो मैंने अभी आइडल वॉक के साथ किया होगा. सो आई कैन गो फास्टर इन दिस पार्ट. सो ठीक है, एलन एनिमेशंस एंड जंप. दैट्स ग्रेट. ठीक है, आई विल क्लिक ऑन एलन एंड यहाँ पे मैं एक नया एनिमेशन क्लिप बनाऊंगा. आई विल नेम एट जंप स्टार्ट. जस्ट अ मिनट. ठीक है, cool. जंप स्टार्ट किया, राइट. सो जंप स्टार्ट के अंदर आई गेस मैं इतने फ्रेम्स ऐड करके रखूँगा. नॉट इवन दिस फ्रेम्स. आई जस्ट गो हियर, राइट. अप टू 9 फ्रेम्स मैं जंप स्टार्ट पे ऐड करूँगा एंड बाकी सारे फ्रेम्स मैं जंप रिलीज में ऐड कर दूँगा. राइट. सो आई विल डिवाइड दिस इनटू अ सेक्शन ऑफ 5 फ्रेम्स एज वेल. एंड मैं यहाँ से बोलूँगा कि वॉक या आइडल से वी कैन गो टू जंप स्टार्ट whenever we want. Alright, jump can happen for when I press a boolean that is grounded. Right, I can get rid of spacings. ठीक है. I can say for when the is grounded variable goes false. I want to go back to jumping. Okay, ठीक है. अभी जंप स्टार्ट से आई वॉन्ट अनदर एनिमेशन हियर दैट इज फॉलोइंग. ओके, आई गेस मेरे को जंप स्टार्ट को एलिवेटिंग देना चाहिए था नाम, बट ठीक है. हियर आई एम गोइंग टू ऐड दिस select 6 frames and I can just discard the other frames as of now. Alright, so jump start से मैं falling पे गया. For when a variable called as vertical velocity reaches less than negative 0.01. Right, and after that falling say we can go back to idle for when the grounded becomes true. Right, that's it. फिर आइडल से वॉक पे जा सकता है वो, दैट्स फाइन. सो ठीक है. सो वी जस्ट वांट टू से कि ग्राउंडेड जब ट्रू हो जाएगा, आई मीन जब फॉल्स होगा तब वो जंप स्टार्ट पे जाएगा. आई विल ऑल्सो से जंप स्टार्ट के बदले इसको नाम देता हूँ एलिवेटिंग. एलिवेटिंग से फॉलिंग पे जाएगा, फॉलिंग से वो आइडल पे आ जाएगा, विच एसेंशियली क्रिएट्स अ लूप for me to work around. ठीक है. So within the jump function I am again going to create here a private void jump instead. Okay, ये जो भी कोड लिखा था मैंने कोड वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा and I'll just say कि anim dot set bull is grounded to false as of now. Right, for whenever I press the jump button or whenever I press the space bar I will be jumping. Alright, ठीक है. Jump के time I just want a float height which is what I will be pasting here. Okay, ठीक है. Cool. Now for whenever this variable goes false, that's when I want to set कि if मेरा body का velocity dot y goes less than negative 0.01 f. Right, whenever it goes down there, in that case I want कि
वेलोसिटी अपडेट। ऑलराइट, सो ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे इतना भी कर सकता हूँ, फॉर व्हेन वेलोसिटी y इज नॉट इक्वल्स टू 0, I can just say anim dot set float vertical velocity to exactly this value, that is body dot velocity dot y. Okay, ठीक है. So what it's going to do, it's going to keep on updating this value as I move around. Okay, of course वो is grounded नहीं है, इसके लिए काम करेगा. Now to get rid of whatever the hell that was, हम लोग को यहाँ पे falling and elevating पे जाना and इनका looping off करना, since we don't want this animations to loop, right? ठीक है, I'll press start. Okay, as you can see ये वाला value update हो रहा है. This is what's important. Alright. And जो falling है यहाँ पे instead of negative 0.0, I'll just write less than 0 because that's fine as well. ठीक है. For when the velocity goes below 0.01, okay, that is when I want to detect grounded. उसका grounded logic चल रहा है कि नहीं चल रहा बराबर से. That is when I want to see that. Okay. अभी usually grounded बनाने के लिए एक raycast या फिर boxcast किया जाता है, which is exactly what I will be doing as of now, as I will create a private bull is grounded करके property बनाता हूँ, alright, within which I'll use its physics 2D class and I'll create a raycast, right at the origin, that is transform dot position, direction would be vector 2 dot down, that is -1f multiplied by transform dot up, that is s transform के negative direction पे. Oops. Okay, if this is the forward direction, let's assume 0 0 0 would be the upwards and forward direction, whereas the downward direction would be 180. Okay, so that is what I'm writing here. And the distance would be, let's say 0.2f. Okay, layer mask is not something that I want to add right now. ठीक है, I'm just going to say return this raycast as of now, and to check if it is working or not, मैं इसको every frame print करूँगा. Okay, and यहाँ पे instead of doing all that मैं एक और चीज़ करूँगा, where info info is not equal to null. In that case, if not info, okay, चलेगा if info. In that case, I'll just write print info dot new or collider dot new, okay, wherein we return info as whole. ठीक है. So I have casted a ray, एक fake ray बनाया, not fake, but from the pivot of this character I have created a ray using code. Okay, a simple small piece of line which when overlapping with different colliders gives me back results of what it has collided with. Now I want to check if there is something below this player's collider or not. If there is, that means the player is grounded. If not, it means the player is floating in air. Simple as that. Okay, so ठीक है, अभी इसको true मिला, इसको ground मिला. Thing is, पहले भी इसको true मिला, लेकिन पहले इसको ln खुद मिल रही है. अभी if we were to look at this ray, right, if we want to see this ray, what we can do is we can use the debug function debug dot draw ray, and यहाँ पे we can copy paste the entire same thing. Okay, transform dot position transform dot up, and यहाँ पे comma के बदले we'll just write multiplication, and we'll also say कि we want color dot red. Okay, so
this is the ray that is detecting everything, right? As you can see, एक ray draw किया है मैंने. Now the thing is, this ray is also colliding with the collider itself, alien का खुद का collider के साथ. So what we can do is we can either mask this ray as to not detecting alien, or we can add offset to it in a way कि वो थोड़ा सा नीचे ड्रॉ होगा, so खुद के साथ डिटेक्शन नहीं होगा उसका, right? For whenever this ray is overlapped with other colliders such as grid के अंदर जो ground है, it's going to detect कि वो grounded है कि नहीं. That is what's going to change things. ठीक है. So the easier way to be, or the best way to do it, would be to add layer mask. Alright, offset also works fine, but ठीक है, यहाँ पे layer mask डाल देते हैं since एक 2D game है. So layer mask डालने के लिए I'll be creating serialized field private layer mask. These are ground layers. Ground layers के अंदर I'll just add this overload within here, right? So it is forever is it's going to work fine all the time. Okay, so अभी मैं यहाँ पे इसको continuously print करूँगा. It's going to also work just fine. हाँ, of course मैंने ground layers डाल दिया, लेकिन ground layers बनाया नहीं है, which is where we need to filter stuff. Okay, layers are basically filters, filtration of what you want to touch or what the object can see or can feel. ठीक है, यहाँ पे I'm going to create a ground layer, and ground को मैं ground layer set कर दूँगा, right? And also alien पे जाऊँगा and बोलूँगा the ground layers are again ground. Nice. So this is true. Well, in air it's false, which is perfect. ठीक है. So that's what we want. So मेरे को jump करने से पहले I also want a new thing कि if not is grounded, in that case I just want to return. I don't want to jump multiple times, right? As अभी मैं इस एलियन के साथ फ्लैपी बर्ड भी खेल सकता हूँ, इतना बार बार उछल रही है वो. I mean poor choice of words, बार बार जंप कर रही है वो for that. ठीक है. So I can just say कि if the character isn't grounded, I would just return from the function. That is, function से तो exit कर दूँगा, U-turn ले लूँगा यहाँ से. ठीक है. So I guess ये सब बराबर चल रहा है. यहाँ पे I can get rid of everything and just create it into an auto property as well. That's fine, right? Properties are usually kept above. यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा and yeah, that's okay. अभी velocity के बाद I also want to say कि if body dot velocity again इसके अंदर ही is less than negative 0.01 f, in that case I'd set this entire thing to is grounded. That is, I will be only detecting ground for when it is falling. When it goes through, we get rid of it, right? So you can see मैंने properly सब बना लिया, सारे features. Alright, the thing is this is very slow, so इसका playback speed मैं 2 times कर देता हूँ. Okay, I guess falling का मेरे को और बढ़ाना चाहिए 2.5. And also while she floats like a balloon, what we can do is we can for now increase the gravity scale. Okay, so you can see we have created a perfect loop where उसका जो leg जो नीचे गिरता है that will only happen for when she is falling down, hence creating a perfect sense कि हाँ ठीक है, controller properly response कर रहा है अपने actions को, right? Of course legs can only come down for whenever the character is falling. वो ऊपर जाते जाते हैं, they cannot move their legs down in that way. That would be physically impossible as well. So हम लोगों ने भी वही ऐड किया है. For when it is going up, she is going to just cowl, and when she is coming down, she is going to
पुट हर लेग्स आउट. ठीक है. अभी अगर मैं हाइट बढ़ा दूंगा, इसका 10 का कर दूंगा. ऑलराइट, इसको सीन पे देखता है. ओके, वी कैन जस्ट सी द काउलिंग, राइट. करेक्ट. इसका हाइट और बढ़ा देता हूँ मैं 20. राइट. इसका गिज़मोस बंद कर देता हूँ सो यू कैन सी इट इन सीन प्रॉपरली. Right, as long as she is going up, she is in a cowl position, and as soon as she starts to come down, there is a response with a change in animation that says कि she is trying to cut through her by pushing the legs down. ठीक है, that's done. Alright, अभी I guess इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं by I guess just writing this condition here. There is no need to have that. Maybe I might be wrong, but ठीक है. Yeah, works fine. इसका jump height थोड़ा सिक्योर कर देता हूँ मैं. Okay, it works fine. सो मेरे को सब ब्रांचिंग का ज़रूरत नहीं था वहाँ पर. ओके, हाँ ठीक है. अभी द थिंग इज मेरा रे थोड़ा बड़ा है. इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज एज सून एज आई स्टार्ट टू टच द ग्राउंड आई कैन जंप अगेन. ओके, बिफोर टचिंग द ग्राउंड. You see, that is a bad mechanic to have. So what you do, what developers do is also add a cooldown to how long your responses will be registered, right? कि अगर एक बार जंप दबा दिया, एक बार जंप प्रेस कर दिया, then for after landing the ground you cannot register another jump input for the next 1 second. That would be a 1 second cooldown and nothing else, right? That would be the constraint. And again, this is a very very basic jump. Alright, you would be flabbergasted as to jump के साथ भी कितना कुछ कर सकते हैं. How deep the mechanics go. I have yet to install coyote buffering, dynamic jumping and everything else. Alright, but ठीक. This ground layers recast is grounded, reset and everything. यहाँ पे मेरा jump का कोड है and यहाँ पे velocity का कोड है, right? ठीक है, this is all related to falling down and going up. ठीक है, the jump function that has all the species of code and I guess that's fine. Everything is working fine. If you want at the end of the session मैं ये script provide कर सकता हूँ तुम लोग को, right? I can just pass on the script. You will be able to get that. या फिर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही दे सकता हूँ if you want to study everything. इसके बाद what I would like to do is हाँ of course environment designing करना है, right? थोड़ा सा, not much, थोड़ा सा. Now environment ऐड करने के लिए हम लोग इसको लेवल को 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे and we'll try to get इसका background. Yeah. Alien sprites environments, not parallax के style set sky. ठीक है, sky का color is what you want essentially, not the entire sky. So I'll just click here and get the sample of whatever sample I can get, or maybe purple, I don't know. ठीक, cool. इसके बाद what I want to do is I want to add multiple mountains. Alright, ठीक है. Now also there is one more thing that needs to be added here. ठीक है, mountains will go into the background layer definitely. Alright, now what I want to add here is first of all a camera follow. Right, a following camera can be easily achieved without coding if you just go to package manager
go to Unity registry and Cinemachine. Alright, now I don't really prefer Cinemachine. I would always prefer to write my own code for camera follow, but since we are on a constraint here, I think it would be best to implement this thing. Alright, go to package manager, packages के अंदर Unity registry में जाना and वहाँ से you'll find Cinemachine. Alright, package manager is where all the Unity packages are kept, made by Unity or made by users, right? So after installing the Cinemachine virtual camera, what we need to do is add to the hierarchy Cinemachine and add a 2D camera, right? It's going to create a new game object which we need to put right beside camera, and यहाँ पे एक logo आ जाएगा that says Cinemachine Break. We want to change the update method to fixed update, right? We also want कि Cinemachine virtual cam में the target to follow should be Ellen, and the body should be a framing transposer as suggested, right? Of course each and every setting cannot be explained right now, but यहाँ पे we just need to expand the body, right? इसके बाद one more thing कि lens का जो ortho size है, we don't want the lens to be orthographic, we want our camera lens to be perspective, right? अभी perspective होने के बाद we want the near keeping paints at 1 and 100. Just follow me along for this. Okay, वो यहाँ से change नहीं होगा, my bad, Cinemachine से change होएगा 1 and 100. ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद we also want कि इसका Z position should be closer. So for now मैं Cinemachine virtual कैमरा को बंद करता हूँ, इसका मेन कैमरा पे जाता हूँ एंड इसको प्रॉपरली फिट करने का ट्राई करता हूँ. ऑलराइट, एक सीन पे इसका फील्ड ऑफ व्यू वी कैन इंक्रीज, दैट इज 75 कर सकता है. व्हाट दिस पर्सपेक्टिव कैमरा डज इज इट एसेंशियली क्रिएट्स अ कोन. ओके, व्हाट ऑर्थोग्राफिक कैमरा डिड वाज इट क्रिएटेड ए रेक्टेंगल एन ऑर्थोग्राफिक व्यू. दिस इज हाउ ऑर्थोग्राफिक व्यू लुक्स. Okay, as you can see in the scene, it's not easy to perceive, but ठीक है, we want to change it to a cone view, right? अभी cone view में इसका perspective बढ़ाने के बाद I guess we can zoom in a bit more, around -4 या -5 works fine. ठीक है, इसके बाद we can go back to virtual camera, turn it on. Alright, ठीक है, of course, cool. ठीक है, so इसको मैन्युअली लेके आना पड़ेगा फॉर सम रीजंस. ठीक है, ठीक. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी कि ऑलरेडी इफ़ आई स्टार्ट प्रेसिंग प्ले माई कैमरा फॉलोज मी, राइट, बट इट्स नॉट फॉलोइंग मी एज इट इज़ सपोज टू, राइट. सो वी वॉन्ट टू एड ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफसेट टू इट्स वाई पोजिशन, दैट इज़ add an offset of 0.8 or something for now, right? ठीक है, even Z पे I guess हम लोग थोड़ा बहुत values निकाल सकते हैं if इसको Y पे ऊपर लेके जा रहे थे 6.25 around. Now we want कि हम लोग को jump करते हुए follow ना करे. For what? We need to increase our dead zone height, which we can see if we turn on game window guides, right? This yellow object is what the camera will be tracking for our player, जिस पे हम लोगों ने ऑफसेट दिया है. ऑलराइट, इट ऑलवेज ट्रैक्स द पिवट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द पिवट ऑफ द कैरेक्टर एलन इज एट अ फीट. सो जब मैंने इसका ऑफसेट बढ़ाया, इट वेंट 0.8 यूनिट्स अबव द पिवट. नाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ द डेड जोन हाइट. ओके, सो ये क्या करेगा, इट वोंट लेट द कैमरा फॉलो एलन ऑन वाई एक्सिस. Again, this looks a little goofy for now, but ठीक, we will fix it. ठीक है. Now we also want कि इसका जो X damping है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 1.2, ज़्यादा नहीं. Okay, we can get rid of Y damping and Z damping as वो कुछ कर भी नहीं रहा. Alright, now we can also add dead zone width, not much, थोड़ा सा, 0.1. What is a dead zone? That is, your camera will only
start following or start moving for when the right object, that is the yellow object, goes out of the dead zone, that is in the blue area. Okay, or else it will just stay its ground. अगर मैं डेड जोन विथ ज़ीरो कर दे अगर मैं डेड जोन विथ ज़ीरो कर देता हूँ एंड मैं प्रेस करता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू मूव माई कैरेक्टर, यू कैन सी इवन ऑन माइक्रो मूवमेंट्स मेरा कैमरा मूव हो रहा है, विच कैन समटाइम्स बी अ बैड थिंग इन गेम्स, राइट? यू डोंट वांट constant movement, like you just sometimes want to have fun, you want to move around. So in that case we set the dead zone width to a value, right? This is going to help you to move left and right without being able to move your camera. ठीक है? So that's great. Cool. And we can also we would have to ignore all the other features, but ठीक है, maybe mess around with this. It is very very self-explanatory. Even a Unity tutorial would just help you a millions, right? Damping, screen wide, camera distance, ये सब सारे basic सी चीज़ है. Okay, it's not something crazy, but ठीक. Okay, yeah, इसका Z position for some reasons camera distance है, ठीक है. I'll just say 7. Okay, ठीक. Now let's focus back onto the mountain. Since we are on a perspective camera, we have a depth, a concept of depth, that is, for when objects are far they become smaller. This would not be possible in an orthographic camera as it doesn't generate a cone. What is far stays of the same size as long as it is within the camera's bounds. Right? So अभी के लिए I'll click on this distance mountain and इसका pivot I'll change to bottom left. इसको अप्लाई करूँगा. What this is going to do is it's going to allow me to change its draw mode from tiled. Okay, एक और चीज़ कि यहाँ पे इसका mesh type we need to change to full rect. Right? And I guess pixels per unit we can just change to 100. That wouldn't be an issue. Okay, so let me switch back to 2D view in the scene, and यहाँ पे you can see I have some mountains. What this is going to allow me to do is इसका draw mode tiled करूँगा and I can keep changing its width to keep on repeating it forever. Okay, so ठीक है, मैं mountains को around here किधर रख देता हूँ. इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड में जाने के लिए इसको z एक्सिस पे भी 10 एक्सिस पे बेचा या फिर 10 के लेंथ पे बेचना है, आई विल से बैकग्राउंड पे भी नेगेटिव 10 जाएगा. राइट, दिस इज व्हाट वी कैन स्केल, मे बी 2. राइट, इसका हाइट थोड़ा सा घटा देता हूँ मैं एंड इसको बेस्ड ऑन मेरे कैमरा में मेरे को नीचे का वाइट स्पेस दिखना चाहिए, उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूँगा अराउंड हियर. राइट, सो ठीक है, -30 on x-axis, -10 on y-axis is where we keep our first mountain. So if you see, अगर मैं गेम व्यू में मूव होता हूँ, you can see clearly there is a depth, right, as to mountains भी किस तरीके से मूव हो रहा है. Now one more thing, इस mountains को wrap mode करने की ज़रूरत नहीं है. We can just make it point no filter and we would want to remove its compression and make the format RGB 32-bit. ठीक है, this would only make the mountains render sharper. Alright, so ठीक है, ये level के अंदर I am going to create one more game object called as mountains and we'll move this mountain right here. Okay, we'll name it M1. ठीक है, अभी this is one of the mountains, right? Okay, so what I want to do is I want to duplicate this, call this M2 and इसको मैं 10 के बदले 20 पे ऐड कर दूँगा, whereas this ordinary layer would also go to -20. right? इसको मैं -50 के y-axis पे रखूँगा एंड इसका width बढ़ा दूँगा like 200 or something, जो M1 का भी कर देता 200. Alright, it essentially created a different mountain. What I can also do is इसको color range दे सकता हूँ, that is okay, not this one, पीछे वाले को change करने का था, M2 को
ओके इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर सकता हूँ, नॉट ऑल बट अ लिटिल डार्कर. ओके as long as you can differentiate between the two mountains, जो गेम व्यू पे तुम लोग को आराम से देख के करना, राइट. एंड देन द सेम थिंग, रिपीट द सेम प्रोसेस, go to 30, negative 30, make it even darker. ठीक है, यहाँ पे I'll make it to negative 70 so that there is a variation. Alright, so essentially we now have 3 mountains. I guess what's the harm in adding one more, right, such as M4 final 40 oops negative 40. and what we can do is in mountains को हम लोग बड़ा scale भी कर सकते हैं, there is no restriction on that. okay, let's get rid of M4 for now. M2 को क्या करता है, 2.1 स्केल का करता है. M3 को क्या करता है, 2.3 स्केल का करता है, या 2.2 में भी, आई डोंट नो, राइट. एंड सिमिलरली M4 को 2.3 करता है. एंड वी कैन मेक इट इवन डार्कर. सो जस्ट सो कि वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 4 levels of mountains that exists. Let's make it or move it back to negative 9 and instead 2.3 I guess इसको 2.5 भी कर दूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. इसको 2.25 कर देते हैं and yeah we have that. So if we press play now you can see how it's going to look. Not bad. For now our character seems to be vibrating because there are a lot of aspects that I skipped while writing the code. Alright, to fix all that aspect in one go, what I would have to do to not make my character vibrate is just add the movement code within fixed update. That's it. Bro, what? I guess मेरा analysis bug हो गया, but ठीक है, doesn't matter. Okay, so I'll just copy this code and paste it here. That's it. That's all I need to do. Alright, even this code can go there into a different function. Now this is going to stop my player from vibrating. Right, it's because the camera isn't moving in sync with the character's motion or with the character's frame. We need to sync everything, each and everything to its minute detail to make a really good game. Alright, so yeah, now it's going to work just fine. Now also, I mean usually ऐसा तो रहता नहीं है कि अपना कैरेक्टर यूजुअली सेंटर पे रहता नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म और गेम में. व्हाट हैपेंस इज द एनवायरनमेंट इज ऑलवेज बायस्ड ऑन टू द राइट एंड कैरेक्टर गोज टू लेफ्ट. सो वी कैन डू दैट बाय अगेन गोइंग इनटू सीने मशीन वर्चुअल कैमरा. यहाँ पे बॉडी ओपन अप करो एंड इसका ऑब्जेक्ट ऑफसेट है जो हम लोग ने एक्स पे सॉरी वाई पे ऐड किया था उसी को एक्स पे ऐड करना. एक्स 2.25 ऐड करता और मे बी 3 एन ऑफसेट ऑफ 3. ओके, and also get rid of that object. So this is what we see now. Okay, certainly not bad. Now to even add more to this, okay, to even add more to this, what we can do is यहाँ पे थोड़े बहुत clouds दिए हुए, so we can hide some transitions between the mountains. Where am I going? Okay, there are a few clouds given, if I remember correctly. Yes, here they are. Alright, so what I can do is between the mountains I can add these clouds. Let's say अभी के लिए ये cloud ऐड करता हूँ मैं, इसको ट्रांसफॉर्म रीसेट करता हूँ. I'll just make इसका ऑर्डर इन लेयर. इसको सबसे पहले 100 का साइज देता है. We don't need to extrude edges and we also need to keep this RGB 32-bit. This is what we can clamp and we can keep in bilinear, right? Bilinear is nothing but anti-aliasing. What is that? Figure it out on YouTube or Google it out basically. ठीक है, a different topic. ठीक है, so
we can keep the clouds in background and we can say -5 पे जाएगा, which means इसको z पे 5 पे भेजता हूँ मैं. I can move it a bit down या फिर ऊपर भी लेके आ सकता है, it won't matter much. ठीक है, इसका स्केलिंग बढ़ा के रख सकते हैं हम लोग, right? And we can also color the cloud as a little bit pink or purple as per our preferences, and we can also reduce the opacity of this cloud. Okay, so it is just a shape that exists as of now. Cool. I guess 200 का shape सही दिखेगा इसके लिए. Now that is one of the cloud. Alright, let's go 5 add करते हैं. Okay, we'll just replicate this and इसको थोड़ा नीचे and clouds mountains के बीच में ऐड करते हैं. Let's say 25, which makes its coordinate layer to -25, wherein I just want to see if the cloud is even visible or not. It is visible a lot. Okay, इसको white करते पूरा and opacity थोड़ा सा कम करते हैं, 150 around. We can also rotate the cloud to -20 and यहाँ पे इसको नीचे भी लेकर आ सकता है, right? And we can keep on adding such details, right? अभी तो मैंने सिर्फ एक क्लाउड का इटरेशन डाला हुआ है. It isn't really necessary कि तुम लोग clouds पीछे ही ऐड करो. What you can also do is you can also add clouds to the foreground. That is, इनको -5 या -3 पे लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर इनका coordinate layer would be background and 3. Essentially foreground पे आ गया वो. Yeah, तो ठीक है, foreground पे I have this cloud at 3. What I'm going to do is इसका स्केल बड़ा होगा, इसको अभी के लिए ब्लैक कर देता ताकि मेरे को एक्चुअली दिखे क्या चीज़ है. 1.25 एंड इसका रोटेशन दे देता हूँ मैं, राइट, लाइक 40 और समथिंग. इसको थोड़ा सा आगे डालता हूँ मैं, राइट, एंड इसका कलर फिर से रीसेट करता हूँ, थोड़ा सा ऑपेसिटी घटा देता हूँ मैं. इट वुड एसेंशियली बी as good as a sun ray. So if I just press play now and if I go to the scene, you can see थोड़ा बहुत detailing से how it changed everything, right? The clouds will also move as we move, as our camera moves, since everything is perspective, right? It will come out of the cover that would be behind the mountains eventually, right? Like यहाँ पे you can see this cloud at this part जहाँ पे मेरा mouse cursor है, we can see it behind the mountain, but as we move further it gets hidden. So that is the magic of perspective camera. Now imagine if I were to put hours into this project and would be filtering this area with clouds. That would be amazing, right? What I can also do is अभी के लिए इसको duplicate कर देता हूँ just for once, right? इसको मैं डालता हूँ 15 पे, -15, right? X पे इसको डालता हूँ 13 या -15 X पे, एंड यहाँ पे सेम. अभी इंस्टेड मैं इसका स्प्राइट चेंज करूँगा क्लाउड सेट के बल. आई गेस आई पोस्ट दिस क्लाउड, इसका कलर चेंज करता हूँ जस्ट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, -3 आई गेस. ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट मेक इट वाइटर. ओके, इसका ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, फुल रख सकता है. इट्स टोटली अप टू मी. It's totally up to how much effort I put into designing this. Okay, that certainly doesn't look bad to me. Okay, maybe ये ऊपर वाला क्लाउड काफ़ी लोनली है, so उसको जस्टिफाई करने के लिए और भी क्लाउड्स ऐड करने पड़ेंगे, बट ठीक है, you get the point, right? You get the idea of what can be there. Cool. Are there any questions? अगर main character is vibrating in walking state. अच्छा, already fix कर दिया मैंने. Look, you just need to move कि तुम लोग का movement का code fixed update पे जाना चाहिए, because update is inconsistent on every different computer, on every different hardware. What fixed update does is it runs itself on every interval of 0.02 seconds by default. Alright, so no matter what, on every machine it's going to run 60 times every second. That is, every machine पे 60 fps static देगा, वो constant देगा, right? So if we were to move our movement का code there, the character would just stop vibrating, right? Even when it stumbles into one of these walls. Okay, as you see यहाँ पे stumble करोगा, it just stays static, that's fine. But when
for when the code was in update. That is, it was updating every frame. What that does, it is creates conflict between the camera and the character. You can see my character is already vibrating, and यहाँ जाके भी you can clearly see that, right? So what happens is the code is trying to push the character forward, whereas the physics colliders and the rigid body is pushing it back to its original position as it's going inside the colliders. So there is a constant push and push back, push and push back. It goes inside, it comes back out, it goes inside, it comes back out. That is what causes the vibration. This thing happening each and every second for 200 times is what causes the vibration. Alright, इसका vibration का भी rate you can determine whatever your FPS is उसका half. If you generate 200 FPS, it is vibrating 100 times. That's it. So ठीक है. So उसको fix update पे डाल दो इतना कोड को. That's the solution. It would just stop doing that. And also make sure कि तुम लोगों ने जो Cinema Machine ऐड किया हुआ है, go to your main camera and जो Cinema Machine brain component है, वहाँ पे update method is also set as fixed update. Alright. If you want कि forcefully तुम लोग character fixed update पे नहीं normal update में होना चाहिए, then make sure कि update method यहाँ पे smart update पे होगा. Okay, or you can just use manual update and उसका documentation पढ़ सकते हो just by clicking on this question mark. Alright, ये तुम लोग documentation पे लेके जाएगा कि किधर क्या है, what is everything. Sorry. And वहाँ से वहाँ पे और doubts है, it will direct you to other links. This is just a brain. There is a Cinema Machine timeline and 2D graphics and everything as well. Cool. ठीक है. So I guess that's it. Any more questions? Right. So हम लोग ने सिर्फ कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर को जंप करा. We added a few environment and ठीक है. This is what we were able to achieve in 4 hours or maybe 3, I don't know. But ठीक है, since you all are new to Unity, this is the pace that we go at. Again, this is not what I would normally teach in 4 hours. ये सब को understanding देने के लिए we take months, right? To create a game that is Alan, it can take a lot of time, 3 to 4 months easily, at least. Okay, the level of assets are too good. But ठीक है, I hope you learned something. And again, I'll wait for 5 minutes. If you have any questions, please write them. And ये project भी तुम लोगों को send कर देता हूँ. I'll just send it to Shashank. I guess he will forward it, right? And also show you one more thing, कि how to take backup of a project. Okay, usually what I see people do is they go to File Explorer and पूरा project उठा देता है, right? I mean, it's gone up to 3.5 gigs, which is really not needed. What you need to back up is asset, packages and project settings. These 3 folders are required, which essentially goes down to 274 MB. You can see there is a significant difference. We just need to zip this. ठीक है. And when you want to use this project, just copy this, create a folder. ये okay, यहाँ पे मैं ये सारे तीनों folders add कर दूँगा. Then what you need to do is you need to go to Unity Hub. यहाँ पे add project from disk. Go to the directory. यहाँ पे ये add करो. इस folder के अंदर there will be a folder called assets. As long as that folder is available, a project can be added. And you can just click here and a project open up हो जाएगा. Right? That's it. So I guess मैं copy process को बंद कर सकता हूँ since I don't need it. ठीक है. So ठीक है.
ये शशांक को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ. वेयर इज माई बॉय शशांक? ओके, मेल करना पड़ेगा. ठीक है, डिस्कॉर्ड पे नहीं जाएगा. Cool. So again, I'll be waiting for questions. If there are, please shoot. Okay then, I guess that's it. Bye bye. Thank you for attending.